तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दाव मारो कि जिंदगी चित हो जाए।
Check. तुम्ही कोण घेता नामरा Good morning and welcome back again to the ACL 2025-26 Season 7. Got the two captains of the Loyal Challengers and also Legal Titans. Heads is the call and it has come down as heads. So, what have you decided? We have decided to field first. As we have seen the yesterday's match also, we have some advantage for the bowlers in the morning session. So we are bowling first. Extra end of a wicket, expecting a big total from you. And Definitely, yesterday also we have seen a very good score on this pitch, 170, which was ultimately chased down by the other side. So we are looking to keep them within the 170, 180. one loss. What are you looking at today? Because they are also looking for win. Yes, we are looking for a win. So we want to start our tournament on a positive note from today. So yesterday's whatever happened, it has gone. So we will definitely try to win today's match. Have a good one, Captain. All the best. Achit, losing the toss hasn't been that scenario or often where we've seen. Batting first, not a new territory for you. A different wicket. Will the luck change from this particular wicket? I hope so. Nothing much. We are playing well. There are some wrongs going on. We'll do well in this game. What kind of total are you looking at? Like for two matches, I'm saying 160, 170 is a good total. And well, will we see a former Ranji and a terrific skipper firing with all cylinders? Hope so today. Okay. Have a good one, Captain. Legal Titans winning the toss and deciding to bowl first.
Praveen Gavas and Lois Challenges will be batting first. Sainath Salgaonkar, Kedar Shirgaonkar, and Mufida Thani. So that's the lineup for Legal Titans, and the lineup for Lois Challenges goes as follows. Achit Sigwan, the captain. Rusaj Talaulikar. Gaurish Naik. Datta Prasad Shirodkar. Shailesh Redkar. Adil Tejas. Iftikhar Aga Parag Viduskar. Rishikesh Rudresh and others. So that's the lineup for Lois Challenges. Both the teams are equally balanced. It is going to be absolutely a good contest for sure. All the best on behalf of ACL for both the teams. Top official umpires Abrar Khan and Vijay Kumar Reddy on the ground for these wonderful matches. Two batters are out. Requesting the extra men of both the teams to please kindly join us to update us with the names. Requesting Achit Sigwan to send your men besides us, and also requesting Praveen Gavas, please signal your men. Come upstairs. Kanhaiya, the deep square leg. So the fielding is set. And a little bit of a warming up by the batters. Datta Prasad Shirodkar on strike, and Swapnil Kamli on the non-strikers end. On the bowling mark is the captain of Legal Titans, Praveen Gavas. Let's play is the call. First delivery of the day. Flow on, a beautiful ball appear for LBW straight away. The very first ball. Absolutely full of confidence. Everyone is going up, exciting, shouting for LBW. The heart must have been right in the mouth of Datta Prasad Shirodkar with that shout to the very first ball. The ball is absolutely swinging a lot. And Gus is wonderful bowler. Has got such good command on the swing. Lovely drive, beautifully played, and excellent work. Stop the ball. What could have been a couple of runs. But with this single, Dippy gets off the mark. Mithun Goenka always smiling, full of positivity. The square leg, standing just beside the official umpire Abrar Khan, former Ranji and selector for Goa under 16, appointed by Goa Cricket Association. Slightly away, and the ball nicely flicked. We'll have to wait for the umpire signal. In the meantime, the ball is racing away. Well done. Just
in time. The interruption. Leg by. There were times when Vijay Kumar Reddy used to nicely balance himself, showing leg by, but these days he's trembling, getting imbalanced. Just wants to pick up early wickets. Praveen. Oh, lovely. Right in the block hole. Beautifully bowled. That literally forced the batter to dig it out. Swapnil calmly. That was an absolute beauty from Praveen Gawas. He's loaded with a lot of such wonderful deliveries which will take the batter by surprise. And this was one of those lethal weapons of Praveen Gawas. Slightly back of hand. Oh, lovely shot. Beautifully played towards the mid-off, but finds field. That was good swing. Just getting the feel early in the morning. Swapnil calmly, which is good. Just to know how the ball is coming up to the bat. The judgment is very important for the new batters. Oh, just wanted to slice it with the ball slightly moving away. Always tries to give the best what he can. There are a few players whom I've been watching playing to the state, and that Prasad Sharulk is one of them. Achit Sigwan, wonderful cricketers. Before they could even complete their LLB, they used to play cricket, and they have made the name for themselves in the entire Goa. Oh, right in the block hole, beautifully bowled, appeal for caught behind. That was absolutely Fuller. Look at this variation, works so wonder. Extra man of legal titans. Vedank from the Chakalim circle end, and that is the area where the bowling has started. Oh, flashy shot, the ball is up, gone past the fielder. But there is a backup fielder, well done. Look at the commitment. Not allowing the ball to go past, it doesn't matter if the fielder has to roll on the ground and get some mud on the jersey.
That truly shows their commitment and dedication towards the game of cricket. Such a wonderful tournament. This is Educates Cricket League Season 7. And this tournament is just getting better, bigger with time. Courtesy President Iftikhar Aga and his entire team. Nicely done. I didn't quite get a hold of that one, but still we'll get a single here for Datta Prasad. This trying to work it out slow and easily. And that is the right approach by the batters. Slow and steady, just trying to get set, trying to know how the ball is coming up to the bat, trying to pick up singles and twos when boundary is already there, which will give them the confidence to play more. Swapnil calmly. Oh, lovely. And that's a trademark shot from Swapnil Kamble. Picked it up beautifully in the half volley towards extra cover. Kamla bounces to the fence. Absolutely a cracking beauty from Swapnil. Effective to be precise. More runs. That's the awareness of the batters. Just keeping the eyes on the ball and taking advantage of each and every mistake committed by the fielders. Good over. Beneficial definitely for the batters. End of 2 overs. 18 runs on the board. Last call. We already have Lois challenges man. Wide signal. Thank you. Someone is definitely heading towards the scoring department from Legal Titans. I'm so very thankful. Sachin himself is very renowned advocate of Bicholi. Wide again. So just not getting the line perfect. Maybe the swing from Praveen after pitching the ball, moving way outside the leg stump. Thorough in progress. Lovely. Once again picked up. Finds the fielder this time. Oh, he has put it down. Definitely an easy catch going down. Oh, maybe against the sun rays.
Was a bit difficult for him to just sight the ball. That was definitely a opportunity. Oh, nicely done. The ball will race away in the final leg region. And a much needed boundary. It's a leg by and boundary. Of course, it was a double sound that the Prasad is just asking. It was a bat and pad. Wide again. A lot of wide in this over. I think this is the third wide of the over. When the captain Wingavas just trying to ball that is swing. A lot of movement. Dampness, moisture helps the swing. Good comeback. The dot ball will mark the end of 3 overs. 27 runs on the board. No damage done.
So 9 runs came up in the last over of the captain. Score moves to 27 runs. Vedank once again on the bowling mark to begin the fourth over. Toss won by Legal Titans, and Praveen Gawas, the captain, opted to bowl first. It was a right decision. Now Legal Titans will grab every catch, it looks like. They pulled up their socks, they've tied the lace fast and tight. Now we will expect no errors from the fielder. Lovely drive picked up on the half volley, but finds the fielder protection there, no chance. They've been playing their drives so good. Dattaprasad Shirodkar, Swapnil Kamble, anything half volley, bang. Yes, is a call well responded by Swapnil. A quick single. Might be two. Yes, it is. Takes the score to 29. ये मैंने एक्चुअली मेरा कपड़े के इज ऑन माय क्लोथ्स उतर के बगैर कुछ हाँ Oh, yes, single will be handy here. The singles and twos are so brilliant by these batters. It's a good call, coordination which is working so well. No hesitation. But at the same time, trying to take care of each other by not taking risk. Whenever the ball goes straight to the fielder, it is then they tend to just stop and not go for that single. Otherwise, when possible, they go for it. Oh, the ball on literally leaning and absolutely wide signaled. The Prasad and Swapnil Kamble. No doubt they have given a good start. They have survived dangerously on 2 occasions. 2 easy catches gone down. But they will try to make the good opportunity of those lives. Lofted shot, the ball is up. There is Kyle. Ticklo. Difficult catch on the runner, but well tried. Swing and a miss this time. Appeal for the caught behind, but not really. The appeal is having that punch or the confidence. Maybe just trying to scare the batters. The beauty of that the Prasad Shirodkar is he just plays his natural. Just keep pushing singles, carrying on with the momentum. Every ball a single at least is what we see from these batters of Lloyd's challenges. A single will be comfortable. Vedang bowling good areas. Not really giving anything away. And the 4.
And of course, he was a professional player, former Ranji. No idea whether he still plays, but he's associated with cricket all the time as an umpire. And as a selector. In the meantime, nicely done. Once again played down the ground. Puts long on. Finds another single here that the Prasad Shirudkar. Leading the way for Lois challenges. As always, a very consistent performer. Alongside Swapnil Kamble. This time taken. Played straight to the point fielder. And Mithun Goenka just shows the way. This is exactly how you need to catch. First wicket down of Lois challenges as Swapnil Kamble departs. The first wicket down of Lois challenges in the 5th over. Prasad providing the first breakthrough. And that brings the captain himself, Achit Sigwan, walks in after the dismissal of Swapnil Kamble. Swapnil played his part for sure. Gave good support to the Prasad Shirudkar from the other side and also equally contributed. On the backward, beautiful played, but finds the fielder there. Kyle, wonderful. Stop the ball, not allowing to go past. Gautesh has been positioned in the deep square leg. Excellent fielder. Oh yes, no, a bit of a hesitation, rightfully so, because Achis Sigwan is a new man. And the ball headed straight to fielder in mid-off. So good it they didn't took a chance. Nicely played away, finds the fielder, but the ball will go past, straight to the fence. Finds the gap, finds the boundary. To sum up over number 5, and what a way to bring an end to the over number 5 with a boundary to take the score to 43 for 1. Lois challenges batting.
of 1 wicket. Skipper and his deputy in the middle, Achachigwan and DP. And Jivan has been brought in to bowl the 6th. Flighted delivery, nicely behind it, Achachigwan. Dot delivery. Bowling it very slow. Skiddy customer. Have to be very careful. Nicely played off the back foot. Fielder does well. Kyle Ticklow. Have been pretty loose, the man in blue today. Dropped 3 chances, got 1. Got that dismissal of Prashant. Not happy with something. Maybe the fielder moving. Again off the back foot, and that's room created. Rocking back and gets a boundary. DP. Shaw Ethernet Express, Jemson's Estate Private Limited, Priority Constructions, Mustafa Collections. Again a flighted delivery, this time down the ground. And good work by the fielder. Bali Resorts, Prescon Homes Private Limited, Chirag Datta Naik Initiative, Manas Developers, Confiteria 31st January Bakery, Hevison Infra. Again, flighted delivery, this time in his own follow-through, dot delivery. Felicity Group, Real Drinks, Hype. Best compliments from Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlikar, Advocate S.N. Joshi, Advocate Gajanan Korgaonkar, Advocate M.S. Joshi, Mr. Viraj Paras. Short delivery off the back foot. No proper timing on that one. And we'll get 1. Single to end the over after completion of 6 overs. It's 49 for 1. Al Muhiddin, Mr. Prasad Sheth, and Mr. Vijay Patil. The entire governing council of ACL Season 7 would like to thank each and every one of them for their invaluable support throughout the tournament. Prasad Maingankar will be swapping ends this time from the airport end to DP. Nicely played. Straight to the field at covers. We're talking about the gameplay of Lower Challenges. Lost to play 2, but they need to give a clean slate now. Need to start fresh. This time down the leg side, and that will be leg byes given. Officials in this particular encounter, Vijay Kumar Reddy and Abrar Khan. And with that, 50 up for the Loyal Challengers. 50 for the loss of 1 into the 7th over. I'm talking about Loyal Challengers. These two hold the key. Any team, any champion team, if they need
a solid start. If they need a big total, they need their top three to fire. And the skipper should be very adamant to do that today. At the toss said that he is looking very positive. It's the very fresh wicket and very small dimensions this time around on the onside for the right-hander. Fired it in down to the field at deep extra cover, coming back for the second. Running between the wickets has always been no issue with these two in the middle. Complementing each other well. Have played a lot of cricket together. Nicely played down the ground. As far as the men in blue, the Titans are concerned, have dropped 3 chances, converted 1. But they need to tighten the screws now, as these two can certainly get on with the challenge and can take you to cleaners. Down the leg side, and that's hammered. Get some bat on it, and that's a boundary. Advocates Cricket League 2025-26. Jeevan will continue, this time from the airport end. Seven overs, 57 for 1. Lower challenges put into bat this time by the legal Titans. Oh, put down. Chance gone begging and seems to be fine. That was a travelling. How costly this could be. Up in the air, chance. And that's taken. Absolutely needless stroke. Going so well, getting the boundaries. Gotesh taking the catch. In fact, Prasad taking that catch. And DP, after getting a good start, has to depart. It's 58 for 2. Lower challenges. Man in. These two had got a really good partnership in the previous game. Fresh day today. Need to do something like that. If they need a big total on the scorecard, 160, 170 would be a good total. But Achit Shigwan will be having some different innovative thoughts when he is batting. Also with Prisaj Talalikar. Dropped a chance earlier and then a half shot, not a complete sweep. What do you call from DP? Very too early to sweep.
Nicely behind it. Prasaj. 58 for the loss of 2. 8th over in progress in this batting of Lawyer Challengers. Some respite being shown by the fielders in dropping chances. Flighted delivery, looking for a single, but rightly sent back. You don't want to take any risk right now. DP was finding the boundaries at will. Just that one wrong shot and it got his downfall. Off the back foot this time, nicely played. Has he found the gap? No, and will be off the mark with a couple. Score moves on to 60. Six teams in this Advocates Cricket League. Head team Junas, top of the table with 3 points. In fact, 3 wins out of 3. Nicely played, lofted. Some fumble. And that will be the end of the 8th. 62 for the loss of 2 wickets. Lawyer Challengers. Sachet Mauskar. Dot delivery. 9th over in operation. 62 for the loss of 2 wickets. Lawyer Challengers. And some extra bit of bounce that's gone through. Back to the point. Kautesh does well. And a couple of runs to Achit Chigwan. This particular surface has some bounce, some carry. Short delivery. Again off the back foot. And kept the deep back to the point busy. Chancing his arm and will make it quite comfortably. Not a rocket arm, a decent bit of arm. So we'll get 2 more. Nicely played. Straight to the fielder. Very well done there. Kyle Tickler. Again looking to sweep and then pulling out on the last occasion. And rightly so. Has got some bounce, has got some carry. His Mauskar. Looks like has got it onto his finger. Hopefully he's all right. Not on the index finger, as it can create some problems later on. Off the back foot this time, down the ground. And will get 1. Single 20 over after completion of 9 overs. 60
7 for the loss of 2 wickets. 67 for 2 after completion of 9 overs. Lawyer challenges. Jeevan will continue. Not happy with something, maybe lost his footing. Yeah, just taking his mark perfectly so that he can deliver the ball. And down the leg side. And will get one. Nicely behind it. Good compact defense by the little man, Prasaj Talaulikar. Oh, good delivery. Very good delivery. Too close to cut. Went on with the arm. Nicely played. And straight to the fielder. Pravin. And will just be one. The single taken. Chigwan gets the strike back. Off the back foot, this time back past the bowler. Fielder will cut it off. That went quickly towards the boundary, but there was some protection. Quickly coming on to that one. That fielder at long off. Again, nicely played. Quickly looking for a single, but denied. Excellent over coming to an end. Halfway stage. It's 70 for the loss of 2. Just 3 runs coming from that over. 70. दो विकेट के नुकसान पर लॉस चैलेंजर्स की बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अब ली है अचित सिगवाल और उनका साथ बखूबी निभाते हुए रुसाज तलावलीकर।
दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज। गेंदबाजी में सचित मौस्कर। शुरुआत करेंगे 11वीं ओवर की चिकालीम सर्कल एंड की ओर से। पटकी हुई गेंद शॉट ऑफ लेंथ बिल्कुल खेल दिया है, वहां पर सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। हालांकि निश्चित तौर पर कैचेस छूटी हैं जो कि 2, मगर अगर बात की जाए फील्डिंग की तो जबरदस्त फील्डिंग जो कि मैदान पर दिखाई देती हुई इलीगल टाइटंस की। और कायल टिकरो के तो क्या कहने, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कायल ने अपनी फील्डिंग के माध्यम से। द बॉयज इन ब्लू मैदान की सजावट की हुई फील्डिंग में खेलने की कोशिश, हल्की सी उछाल भरी गेंद, मगर अपने आप को बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन में लाकर खेल दिया है 1 रन के लिए। अक्सर इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं रुसाज तलावलीकर। जब टिक जाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं, सेंसिबल ड्राइव्स, अच्छे शॉट्स, खूबसूरत रनिंग का मुजाहरा। और बिल्कुल बड़ा शॉट मैदान के बाहर, अच्छे सिगवान के बल्ले से दनदनाता छक्का। तो प्रसाद को पूरे 15 मिनट लगे गेंद को लाने के लिए। इतना बेहतरीन शॉट कप्तान के बल्ले से। बैकफील्ड पर इस बार 2 रन की कोशिश रहेगी, मिल भी जाएंगे। कमाल की दौड़ा को है बिल्कुल रुसाज, देखते ही देखते 2 रन पूरे कर लिए। तो निश्चित तौर पर कोई दुराई नहीं कि एक अच्छा स्कोर सेट कर सकेगी। पहले बल्लेबाजी करती हुई लॉयस चैलेंजर्स अब बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं कप्तान अचित सिगवान और उनके साथ रुसाज तलावलीकर। फिर से एक बार एक मजबूत जोड़ी देखने को मिलती है, बिल्कुल स्विप शॉट का बेहतरीन मिसाल यहां पर पेश करते हुए टाइमिंग के उस्ताद अचित सिगवान। लकड़ी में सबसे मजबूत सागवान और बल्लेबाजी में सिगवान। ये देखिए बिल्कुल आयन कोऑर्डिनेशन, छोटा साइज बड़ा धमाका रुसाज तलावलीकर। छोटे कद के बल्लेबाजों में इनका भी नाम बिल्कुल जुड़ता है। डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अनूप कुलकर्णी और रुसाज तलावलीकर, सभी छोटे कद के मगर जबरदस्त बल्लेबाज। फिलहाल ओवर की समाप्ति 11, 83 for the loss of 2 lowest challenges। देते और अक्सर हमेशा सुंदर शुरुआत के लिए जाने जाते हैं डीपी शिरोडकर। प्रसाद गेंदबाजी में 12वीं ओवर की शुरुआत, मौका, दस्तूर, मगर उतनी ही सुंदर फील्डिंग। अभी मैंने जिक्र किया कि हालांकि थोड़े कैचेस जरूर छूटे, मगर अगर फील्डिंग की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं, एकमात्र बेहतरीन फील्डिंग यूनिट है टीम लीगल टाइटंस। और जीवन दीकर की भी सुंदर गेंदबाजी रही है। ओहो, कमाल का शॉट है ये सूर्य कुमार यादव वाला,
4 रन। लेवल सेट करते हैं बल्लेबाजी का तो रुसाज नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई दर्शकों को। सेंसिबल 2 रन की कोशिश बिल्कुल और मिल भी जाएंगे। तालमेल देखिए लाजवाब, लवली रनिंग है। कोई हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं, सुंदर रनिंग का मुजाहिरा। 2 यानी 2। अब चाहे मार उठे या बाबा, मैंने तो कर ली। 2 मीन्स 2। आखिरी गेंद उनकी। संभलकर अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 की सामना करेंगे कप्तान अचित सिगवान। बैकफुट पर कट कर दिया इस बार, बिल्कुल डीप कवर्स की दिशा की और फील्डर को पाया 1 रन। 1 रन के साथ धीरे से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 रनों पर 94। केवल 6 रन दूर 100 रनों से टीम फिर से एक बार एक मजबूत साझेदारी देखने को मिलती हुई अचित और रुसाज के बीच। गेंद हवा में, कैच का मौका और क्या छूटा। बिल्कुल मौका बनाया था जीवनदीप करने। जब कभी आते हैं तो बिल्कुल विकेट की सौगात लेकर, मगर एक कैच छूटता हुआ गौतेश उतना मुश्किल भी बिल्कुल नहीं था। इस जोड़ी को तोड़ना काफी जरूरी था, मगर फिर से एक बार एक कैच जो कि छूटता हुआ। कैचेस विंस द मैचेस। कैच छोड़ोगे निश्चित तौर पर मौका दोगे बल्लेबाजों को और बेहतरीन बल्लेबाजी करने का, इधर बॉस। मगर यहां पर निश्चित तौर पर भाग्य ने साथ दिया रुसाज तलावलीकर का। द लक फेवर्स द ब्रेव। स्वागत मेरे दोस्त बाबू का। प्रदीप दाभोलकर लोअर फुल टॉस पे कल्याण का खूब से इस्तेमाल किया, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात था। 1 ही रन मिल पाएगा शायद, बिल्कुल, और कोई दिलचस्पी भी न दिखाते हुए अचित सिगवान थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए रुसाज जीवन दान जो मिला है और वो भी जादूगर गेंदबाज के विरुद्ध में जीवनदीप कर। फुल टॉस गेंद, बढ़िया पंच, मगर 1 रन। देखिए आपने नोट किया होगा कि बल्लेबाज जब कभी जीवनदीप कर गेंदबाजी में आते हैं तो कोई रिस्क उठाना पसंद नहीं करते, संभल के खेलते हैं। 100 तो 100 रन पूरे होते हुए लॉयस चैलेंजर्स के 100 अप फॉर लॉयस चैलेंजर्स। तो 100 के आंकड़े पार करते इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिर से बहुत बढ़िया शॉट, गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पार। 4 रन। ट्रेडमार्क शॉट है अचित सिगवान का, स्वीप शॉट।
मुझे तो लगता है कि 170 180 आराम से बना सकती है टीम लॉयस चैलेंजर्स। आज तो लगता है कि बिल्कुल हर टीम का रिकॉर्ड तोड़ेगी लॉयस चैलेंजर्स। मिल काट के खाते हो Shailu, so far highest score set is by which team? Shailu, so far highest score set is by which team? 160, 170. How much? How many? Against? तो लोटलीगर लायंस ने बना है 173 रन, तो सबसे हाईएस्ट अब तक का स्कोर। शायद लॉयस चैलेंजर्स उस आंकड़े को आज निश्चित तौर पर पार करेगी, 180 के पार बना सकती है, अपना लक्ष्य टारगेट सेट कर सकती है, क्योंकि 105 में है 13 ओवरों की समाप्ति के बाद। अभी भी 7 ओवरों का आना बाकी है। 2 विकेट आउट हुए, 8 विकेट अभी भी बाकी। So still a long way to go for Loyas challenges. Rusaj strike पर। गौतेश गेंदबाजी में। कलाइन का खूबसूरत इस्तेमाल किया प्रसाद, वहां पर मौजूद 2 रन की कोशिश हो सकती है और मिल भी जाएंगे आसानी के साथ। रनिंग की बेहतरीन मिसाल यहां पर पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में स्विफ्ट रनिंग। कोई हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं। लवली शॉट, मगर वहां पर गेंद को रोका जाएगा स्वयं कप्तान प्रवीण गावस लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। The extra players in the deep covers, please sit down, don't stand. The extra covers, the extra players, yes, thank you. Thank you. ये देखिए कमाल का बिल्कुल मिडास टच, केवल बल्ले का संपर्क होना बाकी और गेंद रफ्तार पकड़ेगी, लगातार बाउंड्रीज बटोरते हुए कप्तान अचित सिगवान। चीज को छूता था सोने में तब्दील हो जाती थी, और अचित सिगवान जब कभी उनका बल्ला गेंद से छूता है तो बाउंड्रीज निकल जाती हैं। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। डाउन द ग्राउंड, मुझे लगता है इस बार बड़ा शॉट है, ये बिल्कुल खोल दिया है हाथ और कप्तान के सर के ऊपर से 6 रन। एडुकेट क्रिकेट लीग की सचिन सरदेसाई, अनूप कुलतरकर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों की निगाहें रहेंगी। क्या अचित हमसे बेहतर? निसंदेह फिलहाल तूफानी बल्लेबाजी। ओ इसी बीच लगातार बिल्कुल इस बार बाल बाल बच गई गेंदबाज। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 124
तो सभी स्पॉन्सर को और सभी पैट्रन्स को ढेर सारी धन्यवाद। एडुकेट्स क्रिकेट लीग के इस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए सभी स्पॉन्सर का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे सहयोगी श्याम कलंगुटकर वे नाम लेंगे। सचित मौस्कर जो कि 15वीं ओवर लेकर फील्डिंग में बदलाव करते हुए फिलहाल तैयार। कदम इस्तेमाल किया इस बार, बिल्कुल सुंदर फुटवर्क टीम वर्क यहां पर देखने को मिलता हुआ, मगर 2 रन से नहीं रुक पाएंगे बल्लेबाजों को। सुंदर फुटवर्क जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल गेंद को फुटबॉल की तरह देख रहे हैं रुसाज तलावलीकर और अचित सिगवान। पूरी लय में बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। अंग्रेजी में एक टर्मिनोलॉजी जो इन्हें सूट करती है वो है सबलाइम फॉर्म। निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं, वो द बैटर्स आर बैटिंग इन अ सबलाइम फॉर्म फॉर श्योर। कलर का खूबसूरत इस्तेमाल किया इस बार, 1 रन। कंट्रोल एग्रेशन का एक बेहतरीन मिसाल। Singles and twos, wait for the right opportunity. Ending shot of length, half volley, juicy full toss, go for the big ones. और हमने देखा पिछली ओवर में हाफ वॉलीज पर 2 लगातार लंबे शॉट्स अच्छे सिगवान के बल्ले से निकले, बिल्कुल मैदान के बाहर। 180, दूसरा 85 मीटर्स दूर जाकर गिरी है गेंद। यहां तक कि हमारे कैमरामैन भी घबरा गए। हल्की सी उछाल भरी गेंद, स्वीप शॉट, मगर शायद बाय रन यहां पर मिलेंगे, सिंगल। जी हाँ, इशारा आता हुआ बाय का, बाय लेग बाय और बल्ले से। What matters is runs on the board, and that is exactly what these 2 batters are getting handsomely for the team. In the meantime, beautifully worked and played towards the deep covers, finds the fielder there. A slight bit of a fumble. Oh, fumble there means you're inviting trouble. It's a lucky boundary, and Risaj Tarawikar cannot believe. ये चौका। दिशाहीन गेंद वाइड। कौन सा गेंदबाज है जो इस जोड़ी को तोड़ेगा? हालांकि जीवन दीवकर ने बिल्कुल एक मौका बनाया था, मगर क्या छूटा गौतेश के हाथों से। एक रन के साथ 15 ओवरों की समाप्ति। 134 for 2 after 15. Change in the voice.
15 overs done. 134 for the loss of 2 wickets. Lower challengers. Launching pad has been set. These two in the middle, 46 and 32. 46 for Chichigwan, 32 for Rusaj Lotlik have got that partnership which was desperately needed to post a big total. Skipper has brought himself on. Looks like he will be taking the charge of this particular over. Yes, indeed. Nicely played. Oh, this is delicate, deft touch. Delicacy at its absolute best by Rusaj Lotlik. का नया तरीका Song and this man short and big, and the short man is making some stroke play. Well, his partner is just looking at him, waiting from the other end. Clipped away in the air, fielder dropped. Chance gone again. That has been the 5th occasion now that the men in blue have dropped a chance. Well, this partnership is growing. It's becoming a big headache for them. The skipper had almost had his man, but no, not on that occasion. Dropped again. This time Rusaj gets a lease of life. Nicely played off the back foot. Will get a single. Class apart. Skipper to skipper and playing sensibly. He knows the importance of his wicket and also the kind of metal that he has. Short delivery nicely played. And will just be a single. So far 11 runs of this over. Have been very productive. What kind of questions Praveen Gauss is asking the batters? Nicely played. Will be looking for the second. Pushing hard. And will make it quite comfortably. Diving effort. Commitment. Full marks by
Change in bowling, it will be Vedang from the airport end. (147 for the loss of 2 wickets). 16 overs done. Nicely played, and that's gone all the way for maximum, and with that 150 up for the loyal challengers. Just a mere nicely played, lofted drive, and Pravin Gavas has already given up, and with that half century for Lotlik came in and has entertained one and all. Fabulous knock, maximum of the first, and then a linguistic bit of a cover drive. Fabulous knock. This was dropped earlier in that previous over, and now has come up on his own, batting on 51 right now. Score moves to 157. This time down the leg side, some bit of work for that fielder, Prasad. And as well, leg by is the signal given by the umpire. Nicely played down the ground. Fielder. Oh, that's gone through, and with that, half century for the skipper as well. Achit Chigwan leading from the front. And a captain's knock by Achit Chigwan. Fabulous timing. Right from the meat of the blade again. 15 runs. Sportsmanship from Gaurav. Came in from the third man boundary to cheer his associates. A loose shot. Again, might have just been carried away with that half century completion. These two seeing the deliveries pretty well now. Now they will try and capitalize, as this particular end being the shortest on the onside for the right-hander. There he goes, up in the air. Fielder. Oh, gone over him. It's running towards the fence. Field after the ball. And just gets the old boot in. And will be 3 runs. Coming for the 4th. And that is excellent running. He slipped. And that will be 5th run. Firstly, it went up. So 5 runs added.
All due to those fabulous running between the wickets by these two. After completion of the 17th, 167 for 2 after 17 overs. For 2. 5 runs. They ran. It was not a boundary, but 5 runs scored. Terrific running between the wickets. That shows the commitment, that shows the fitness level of these two. Praveen Gauss into his last. From the airport end. Carved away. No proper timing. Will just be one this time. A single taken. Score moves to 168. 168 for 2. Last 17 deliveries. Will fall in no man's land and will just be one. Coming back for the second? No. Settling for just a single. Achit wanted that second, but Brisaj might have just been telling him, I was already there towards that end. Haven't timed it that well. Haven't ran the first one quickly enough so that I can get back towards the danger end, towards his batting end. 2 of 2. Short delivery, nicely played. They will push this time. Definitely they are going to push. Two more runs added. It'll be tiring. Short delivery. And oh, just bouncing. Well, that fielder would have been showing some signs of coming towards the ball, but no. More importantly, for the loyal challengers, these two batsmen still in the middle. Still providing that shot making. This time missed out. A dot delivery. Again, this time a short delivery and can't get anything. A terrific over coming to an end from Praveen Gauss. He has done his quota of 4 after completion of the 18th.
that highway closest towards the onside boundary. Anything in the slot will definitely be out of the park. Short delivery, and there you go. The fielder is a mere spectator, but it hasn't gone on the street, but has fetched him a maximum. Score moves to 178 with that 6. Will be the reply of the bowler. Does he try and bowl outside the off stump, or does he still target the stumps? Still trying. That's gone through the keeper, and that will be bonus. 4 byes. Well, early distribution of gifts of Christmas. Score moves to 182. Titans dropped a few catches and this kind of things as well. Swing and a miss. Again trying to take the aerial route, maybe trying to go over the side screen. He's very muscular, very powerful, very superstitious. He is Utkarsh. Three deliveries. Flown over the keeper. Some work for the fielder. And he does well. Excellent work. Coming back for the second. Not a good return, but will manage to get 2 more. Hachit Chigwan. Score moves on to 184. Yes, these two have ran really well, complemented each other in shot making as well as the running between the wickets. This kind of innings was needed, a long due innings by these two to put a big total on the scorecard. Short delivery, flat batted, and that's gone through. And that will be just checked whether it's bounced in or has it gone the distance. A flat hit by the skipper. Final delivery of this 19th over. Swing, missed, and that's gone. Outside edge. And what a fabulous knock from the skipper. At the toss, he said that he needed a brisk innings from his perspective. And he's gone for 74 of just 43 deliveries. What a knock. 4 boundaries and 4 maximums. Take a bow, Chigwan. Keeping
126 for the loss of 3 wickets. Final over coming up. New man in. In fact, 188 for the loss of 3 wickets. Lower challengers. Shailesh Redkar is the new man in at the non-striking end. Vrusaj Tarawlikar still in the middle. Sachit Mauskar to bowl the final over. Swept and swept for a boundary. That's gone for 4. Well, the fielder at the mid-wicket region was just standing there. He would have been going to stop that ball, but he didn't. And the fielder from Cow Corner came all the way to try and stop it, but it didn't. 192 they move on to now. Last 5 deliveries remaining. False start, maybe just trying to see what the batter is doing. Somewhat a cat and mouse. Shimmer down the wicket. This time in the air. And gone over. Little man with some big hits. A maximum 198. Well, we'll be seeing the first 200 of the ACL Season 7. Coming from round the stumps, short delivery, nicely played. Will be coming back for the second. Oh, gone through. Over in that one. And with that 200 up. 202. A big total is what they are thinking. Achit Shigwan at the toss saying that he was looking for a big total and will be relatively happy right now. Not just relatively happy, will be very happy with 200 on the score. Nicely played, and that's gone again. The fielder, can he cut that off? He will, inside the boundary rope. And a couple of runs to Vrusaj. Boundary of the first, then a maximum, then again a boundary, and now 2. 204. Flighted delivery again, this time in the air, fielder getting underneath, and that's taken inside the rope. And again, a really good innings, this time by Vrusaj Tarawlikar, coming to an end. A fabulous knock. 69.
here in the ACL T20 Season 7. Datta Prasad went early for 33 but provided good start of just 26 deliveries. Swapnil
Good. Yokar, Istiqbal, and a warm welcome. 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करेगी टीम लीगल टाइटंस. लंबा सफर इस टीम के सामने देखना होगा, इस सफर तक किस तरह से पहुंचेंगे. बिल्कुल काफी जद्दोजहद करनी होगी बल्लेबाजों को, काफी मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, अच्छे शॉट्स लगाने होंगे. बढ़िया शॉट, गेंद हवा में. बिल्कुल इसी प्रकार की बल्लेबाजी की अगर शुरुआत होती तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है. 4 रन. तो पहला बड़ा शॉट बिल्कुल जो कि लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में मिड ऑफ फील्डर की सचित मॉस्कर और काइल टिकलो, दो धुरंधर बल्लेबाज. के इस बार इनसाइड एज. रुसाज हल्की सी फंबल करते हुए, मगर एक रन का मौका मिलता हुआ सचित को. अच्छी शुरुआत की फिराक में सचित मॉस्कर. टिकना होगा, जमना होगा. काइल टिकलो को बिल्कुल जिम्मेदारी लेकर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी. सबसे बड़ा स्कोर अगर अब तक यानी कि सीजन 7 में एसीएल के किसी ने खड़ा किया है तो वो है लॉयस चैलेंजर्स. 206 रन बनाकर 207 का लक्ष्य खड़ा किया है. बेहतरीन बल्लेबाजी रुसाज तलावलीकर की, अचित सिगवान. ये जोड़ी बिल्कुल काफी कारीगर साबित हुई. लगभग 60 प्लस योगदान रुसाज का बल्ले से और 70 प्लस योगदान अचित सिगवान का. तो दो बल्लेबाजों को अर्धशतक लगाना पड़ा तब जाके स्कोर 200 के पार जाता हुआ. और क्या बल्लेबाजी, बिल्कुल हर लम्हा, हर पल, हर शॉट, हर सिंगल में भरपूर मजा आता हुआ. पूरी तरह से दर्शकों का मनोरंजन किया है इन दोनों ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से. काइल स्ट्राइक पर जाने दिया गेंद को और बिल्कुल अच्छी कोशिश वहां पर विकेट के पीछे. एक हाथ से गेंद को रोकने में कामयाब विकेट कीपर, वरना गेंद निश्चित तौर पर चली जाती. और कोई बैकअप फील्डर बिल्कुल नहीं था. कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 4 रन मिलने की संभावना थी अगर गेंद निकल जाती विकेट कीपर के दस्तानों से. स्वागत एडवोकेट भाग्यश्री का कॉम बॉक्स में. एडवोकेट सुफल, एडवोकेट वेलेंसिया, एडवोकेट लुइस, एडवोकेट इरफान, सभी की मेहनत रंग लाती हुई. अगर किसी का नाम न ले पाऊं तो माफी चाहता हूं, अनकरीब जरूर लूंगा. बिल्कुल हल्के हाथों से एक सिंगल. बिल्कुल जिम्मेदारी यहां पर लेने की कोशिश काइल टिकलो में नजर आती हुई है. और सचित मॉस्कर ने एक चौका लगाकर बिल्कुल आगाज किया है, ऐलान किया है बेहतरीन बल्लेबाजी का. वो सुंदर गेंद, कोई फुटवर्क नहीं. सचित
खड़े खड़े खेलने की कोशिश, मगर तारीफ करनी होगी आखिरी गेंद बिल्कुल लाजवाब। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर 8 बिना किसी नुकसान की, 207 का पीछा करते हुए लीगल टाइटंस। गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में तीसरे नंबर पर और गेंदबाजी में दूसरे नंबर पर, और जब कभी आते हैं बेहतरीन प्रदर्शन का मुजाहरा देते हैं अपने परफॉर्मेंस से। ये खासियत अचित सिगवान की है। डब्ल्यू एयरपोर्ट इनकी ओर से गेंदबाजी का क्रम जारी है। और हल्के से बल्ले का मिला हुआ कोशिश थी बिल्कुल वहां पर कैच लपकने की, मगर काफी तेजी से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों से एक मौका बनाया था, मगर काफी मुश्किल था, इसमें कोई दो राय नहीं। आते ही बिल्कुल कैच। अगर विकेट कीपर पूरी तरह से तैयार रहते तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन कैच होता है, मगर डिफिकल्ट कैच, उसमें कोई संदेह नहीं। संभल कर पूरे बल्ले के साथ एक रन हाना या हाना हा होता, वैसे बीच अच्छी कॉलिंग सचित की। हालांकि कायल उत्साहित नजर आ रहे थे एक रन लेने के लिए, मगर उन्हें रोका। जब टिकते हैं, जमते हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं कायल टिकलो, उनमें दमखम स्टाइल है, ताकत है, ताकत है बेहतरीन शॉट लगाने की, सुंदर टाइमिंग से भरपूर। नो वन मूव्ड एट द बॉल, रेस टू द फेंस, लॉग ऑफ रीजन। क्या नजाकत, बेहतरीन स्टाइल, ये बल्लेबाजी कायल टिकलो के पूरे बल्ले के साथ ड्राइव लगाया, दंदनाता चौका। संभल कर बिल्कुल सेंसेबल इस बार हामी भरी और एक रन आसानी के साथ पूरा करते हुए पॉइंट की दिशा की ओर इफ्तिकार आगा, एक बेहतरीन फील्डर। अगर इस श्रृंखला की सबसे पहली और बेहतरीन कैच किसी ने पकड़ी तो है इफ्तिकार आगा। गली की दिशा में डाइव लगाकर बिल्कुल लैंडिंग परफेक्ट और दर्शनीय कैच। गेंद हवा में, कैच इट का कॉल, फील्डर बिल्कुल गेंद के नीचे, और अच्छी कोशिश वहां पर, मुश्किल था, काफी तेज हवा का बहाव भी। रुसाज तलाव लेकर थोड़े से पीछे रह गए जब तक ये निर्णय किया कि गेंद तक पहुंचना है, डाइव लगानी पड़ी, मगर गेंद हाथों से छूटती हुई। इस बार सुरक्षित रहेंगे, कम से कम 2 रन की यहां पर मौका मिलेगा। गेंद को देखते रह गए कायल टिकलो और सचित मौस्कर। इससे बेहतर था कि रनों की कोशिश करें, कम से कम 3 तो मिल जाते हैं। फिलहाल ओवर की समाप्ति का अच्छा ओवर, जिसमें 2 मौके कैच के, एक विकेट कीपर के लिए, एक रुसाज तलाव लेकर के लिए। फिलहाल दोनों ही कैचेस हाथों से जाते रहे और दोनों ही थोड़ी सी मुश्किलें कैचेस बिल्कुल थी। 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर
18 रन यानी कि 10 रन इस ओवर में बिना किसी नुकसान के, 18 फॉर नो लॉस। तो बिल्कुल लुइस और वेलेंसिया को देखना होगा। बिल्कुल हमेशा साथ साथ कलीग्स। शुरुआत तीसरे ओवर की है। इस बार बिल्कुल एम करने की कोशिश। पराग वेलुस्कर की गेंदबाजी, गेंद को बिल्कुल अच्छी तरह से शाइन देते हुए और बैकफील्ड पर बढ़िया ड्राइव, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन का मौका नहीं। गैप ढूंढने की कोशिश, बिल्कुल अच्छी ड्राइव्स निश्चित तौर पर दिखा रहे हैं काइल टिकलो। इसी प्रकार से टिकना होगा, लंबी पारी खेल सकता है ये बल्लेबाज। हाफ वॉली फिर से एक बार बेहतरीन शॉट, मगर नहीं रोक पाएंगे। इतनी ताकत जरूर थी कि बिल्कुल फील्डर वहां पर लड़खड़ाते हुए, और एक बेहतरीन चौका काइल टिकलो के खाते में। पराग गेंदबाजी में पटकी हुई गेंद, इस बार बिल्कुल स्क्वायर कर, जबरदस्त सुंदर फील्डिंग में से एक बार इफ्ती की, एक दीवार की तरह मजबूत डटे रहते हैं। जेके सुपर की दीवार टूटेगी नहीं, गिर जाएगी। बिल्कुल क्या बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट की दिशा की, और जहां पर अक्सर मेरे फेवरेट जॉन्टी रोड्स लेजेंडरी फील्डर तैनात रहते हैं, और उसी पोजीशन पर कप्तान अचित सिगवान ने लॉयस चैलेंजर्स के सबसे बेहतरीन फील्डर इफ्तिकार आगा को तैनात किया है, यानी कि पॉइंट की दिशा में। उनके बगल में दत्ता प्रसाद जो गली में, कवच में स्वयं कप्तान अचित सिगवान। उस बार दिशा दी, मगर गेंद गैप दूर निकालते हुए बिल्कुल क्या बेहतरीन, केवल नजाकत भरे अंदाज से हल्का सा पुश दिया था गेंद को, और गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पार, और दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल जमकर बाउंड्रीज बटोरते हुए इस पावर प्ले ओवर्स में। इस बार लगातार दमदार चौके, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सचित माउस्कर, जबरदस्त टाइम के। लीगल टाइटंस चेजिंग 207 टू विन।
इफ्तिकार आगा को लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में। फाइटर प्लेन देश की रक्षा के लिए उड़ान भरता हुआ बिल्कुल मैदान के ऊपर। तो चौथे ओवर की शुरुआत इफ्तिकार आगा लगभग 11 रन प्रति ओवर बनाते हुए बिल्कुल सुंदर बल्लेबाजी की शुरुआत, इसी प्रकार की शुरुआत की आशंका लगाई जा रही थी टीम लीगल टाइटंस की ओर से, और दोनों ही ओपनर्स फ्लायर देते हुए अपनी टीम के लिए। तो बिल्कुल जब बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो 6 ओवर्स पावर प्ले का पूरा भरपूर फायदा उठाने का, और वही दिखता हुआ मैदान पर। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, रनों को सीमित करने का प्रयास देखना होगा इफ्तिकार आगा की ओर से कितना सफल साबित होता है चौथी ओवर में। हालांकि एक सुलझे हुए खिलाड़ी, संपूर्ण खिलाड़ी इफ्ती फॉली इस बार फुल ऑन था, मगर एक रन मिलेगा। देखिए टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है बल्लेबाजी में। अच्छी टाइमिंग के साथ गेंद बिल्कुल बिजली की तरह निकल जाती है सीमा रेखा पार, जब कभी दमदार शॉट होता है और गेंद बल्ले के बीचों बीच से जब निकलती है उसे कहते हैं बिल्कुल शुद्ध टाइमिंग। इसे कहते हैं शुद्ध टाइमिंग। बिल्कुल इस बार हाफ वॉली पर बड़ा शॉट मैदान के बाहर, 6 रन। ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं योगेश नाइक। व्हाट अ फाइट बैक, फुल टॉस इस बार, फिर से एक बार कड़ा प्रहार, इस बार चौका मिड विकेट दिशा की ओर, और फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाया सचित मॉस्कर ने। पहले छक्का और अब चौका। ये बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा, जिस प्रकार से अचित और रुसाज ने बल्लेबाजी की थी लॉयस चैलेंजर के लिए, उसी प्रकार की बल्लेबाजी अब इन दोनों ही बल्लेबाजों में दिखाई देती हुई। इस बार शायद गेंद को रोका जाएगा क्योंकि वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी बल्लेबाजों को। हल्का सा महंगा ओवर साबित होता हुआ, जो कि चौथा, और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 45 रनों पर जा पहुंचे, केवल 5 रन दूर। बढ़िया ड्राइव, 46 रन 4 ओवरों की समाप्ति के बाद, 46 यानी 46 फॉर नो लॉस। लीगल टाइटंस कप्तान अचित सिगवान, जो कि शुरुआत करेंगे 5वीं ओवर के। लगभग 11 से 12 रन प्रति ओवर बनाते हुए बल्लेबाज 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बिना किसी नुकसान के। गेंद हवा में इस बार, मगर मौका बिल्कुल नहीं, और पहली गेंद पर ही चौका।
तो चौकों का सिलसिला लगातार जारी है बल्लेबाजों की ओर से। लीगल टाइटंस क्या 207 का पीछा करेगी? कर सकती है। अभी भी काफी दमदार बल्लेबाज आने बाकी है। गेंद हवा में कैच का मौका इस बार। कोई गलती नहीं तेजस की ओर से, और आखिरकार कप्तान ने पहले विकेट की सफलता दिलाई अपनी टीम लॉयस चैलेंजर्स के लिए। कॉट तेजस bowled by Sigvan and Kyle Ticklow departed on 50. For now, legal titans 1 wicket down. You lost something there. Look behind.
मिथुन गोवेकर पूरी तरह से हिंदुस्तानी, मगर जब पहली मर्तबा मैंने उन्हें देखा तो मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज आए हैं। तो 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 52 रन बदलाव कमेंट बॉक्स में। मेरे साथ जुड़े हैं श्याम कलंगुटकर। Nicely bowled, nicely tucked around, but some loose effort in the field will allow a couple of runs. 2 more taken. Score moves on to 54. 54 for the loss of 2 wickets. Partnership was growing. Glenn Ticklow, in fact, Carl Ticklow got out. So did another wicket fell. 2 wickets down already in pursuit of 207. A tall task ahead for the illegal Titans. Left alone, that will be wide. Extras. Score moves on to 55. A big thank you to all the patrons for the ACL Season 7. Desert and Mo, Sherwin Shaw, Ethernet Express, Jemson's Estate Private Limited. Good delivery. And we'll get a single in form of leg buys. Priority Constructions, Mustafa Collections, Bali Resorts, Prescon Home Private Limited, Chirag Datta Naik Initiative, Manas Developers, Confeteria, 31st January Bakery, Avison Infra, Felicity Group, Real Drinks, Hype. Best compliments from Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlikar, Advocate S.N. Joshi, Advocate Gajanan Korgaonkar, Advocate M.S. Joshi, Mr. Viraj Paras, Mr. Laljit Deboya. Excellent delivery. That one went away from the right hander, Mithun Govekar. Coming back to that list, Mr. Balkrishna Hodarkar, Mr. Siddesh Amonkar, Iqbal Mohiddin, Prasad Sheth, Vijay Patil, Adwal Parker Developers. Again, straight to the field at short cover. Chigwan batted brilliantly, 74 with the bat, along with Visaj, 69. These two nicely turned around and will get a single. Direct hit, but seems to be fine. Will just be one. 6th over in progress. Target of 207. They need at least around 10 runs, 10 to 11 runs per over, so that if they can get towards that 207, both teams looking for win. Good delivery. Left alone, and that will be end of the 6th after completion of 6 overs. 57 for the loss of 2 wickets.
Change in bowling from the Chikaling circle, and it will be Iftikhar Aga. 6 overs done, 57 for the loss of 2 wickets. Legal Titans, target of 207 for them. Gone, given, and Mithun Govekar departs. Iftikhar Aga will be Papa Hoop on that occasion. Hasn't given him any send-off, but will be celebrating. And a third wicket down. It's 57 for 3. Another exact 150 required to win. This being the 7th over in progress. Iftikhar Aga has got a danger man. Nicely bowled. Iftikhar Aga was very expensive in that first game, but since then he has dropped one game and then has come back in this game terrifically. That's up in the air. Fielder is a mere spectator on that occasion. Pravin Gauss showing intentions pretty clear. Maximum to get at the nicely played with soft hands, and will get a single. Good batting this. After getting that maximum, get a single, rotate the strike. Score moves on to 64. Slightly wants that man from deep mid wicket towards the cow corner position. Nicely played. Straight to the man at gully. Will just be another single. Once you get a boundary, you can turn around the strike so that you can get that required 10 to 11 runs every over. Again, just opening the face of the blade and getting yet another single. Single to end the over after completion of 7.
Change in bowling, it will be Parag Veruskar. Nicely played. And down to the field at cover boundary. Will just be one. Score moves on to 68. 8th over in progress. It's very well kept. It was down the leg side. Very well kept by the wicket keeper. Excellent work. One more as extras. Score moves on to 69. A target of 207. Need to cut down in certain phases of the game. Yes, it is a big total, but you need certain runs to score in certain particular overs. Swing and a miss. Excellent take again. Terrific wicket keeping this. Flying take behind the stumps. Just turned around. Down to the short fine. Will get a single. Double header today. As in the afternoon session, it will be Lotlik Alliance taking on the Risers. And Lotlik Alliance also looking for a win. As far as the Risers are concerned, they have won one and lost one. Have that down the ground. Presage will mop it up. This be another single. 8th over in progress in this batting of Legal Titans. As I talked about the phases of the game, at the 14th or 15th over, you need to be around that 140, 150 mark. Still, if you have got the power hitters later on, then no need to worry. But if you are not having those kind of batters at the back end, then you certainly need to keep up with that run rate till the very end. 10 to 11 runs per over. Not to just try and slip it away from your hands. Nicely bowled, looking for a quick single, and will get it quite comfortably. Single to mark the end of the 8th. It's 71. For the loss of 3 wickets. Let's check the field for Iftikhar Aga. What kind of field does he have now? Deep square leg, mid wicket, long on, long off, wideish bit of long off, and a sweeper cover on the fence. Talking about the infield man at back at a point, maybe a gully kind of reason. Back at a point would be the better position for that.
And now a man has been put on the short third. Man at cover as well. And one man at the mid-on. Just behind him is the long on. Good delivery. And that's gone down the ground. And will be another couple. 2 more runs taken. Good running between the wickets by these two. That's up in the air. Fielder taken quite comfortably. Iftikhar Aga is tightening the screws right now of the illegal Titans in this run chase. Of the Titans. Praveen, it was Sachit Mauskar. And a new man in Sachin Ramnathkar. 73 for 4, requiring another 134 in 70 deliveries. Good delivery. Iftikhar Aga has been a bit expensive but has got the 2 wickets. That could have been the plan. Excellent delivery again. Another good delivery. Another dot ball is fired again. As Iftikhar Aga. Teammate Utkar Sawant will be really happy with the proceedings right now. Given some word of advice early in the morning when Achit Shigwan arrived. So did DP and also Vrishaj Taravlikar. One-on-one sessions with them. And improved some bit of batting display by the team. And now in the bowling department, senior pro Iftikhar Aga is displaying his skill with the ball. Has been around the circuit for so many years, knows his importance, knows his presence and the experience that he brings to the table. 74 for 433 in 67. Short delivery. Again trying to play it over the offside but missed out. Another over gone. Just 3 runs coming from it and a wicket. 74 for the loss of 4 wickets after 9 overs. Legal time.
cut away. And cut away for 4. Gets the boundary on the very first delivery. Sachin Ramnathkar. And now needs exactly to try and maneuver the runs around. Oh, quick delivery. Really good bowling this. Talking about chances. Previously we saw the man in blue, Legal Titans, dropping a lot many catches, some loose efforts in the field as well. And now currently the lower challengers have also dropped a few but haven't given any easy singles. That's nicely played off the back foot down to the fielder. Oh, fumble from him. And will just be one. This is what is lacking right now for the Legal Titans. As when Achyut Chigwan and Prasad Taravlikar were batting, they ran the first one pretty quickly so that if any chance of any misfield was done, then they came back for the second. This has to change with the Legal Titans. Trying to just dab it round, but couldn't quite. Another dot delivery. Almost the halfway stage. 81 for 4 Legal Titans. In the air, and that will clear the man just wide of him and gets a boundary. Again, Sachin Ramnathkar dealing in boundaries right now. Score moves on to 85. Outside the off stump. 10 done. It's 85 for 4. 85 for 4.
Gets 122 required in the next 10 overs. 12.2 runs per over. Iftikhar Aga into his last has picked up 2 wickets. Will be definitely eyeing to get one more and tighten the screws more for his team. That's up in the air. Fielder gone over him. And it's gone for 6. A maximum from the skipper. 91. So maybe just that in fact that's gone for 4. It's given as a 4 now. So might have just been bouncing inside. Just falling short of that boundary. Short delivery again. And this time on the onside. Very well fielded. Will be just one. Maybe clear calling now from Pravin Gauss. Just at that time during the drinks break, might have been a clear message from their think tank to try and accelerate as many as overs possible in the middle phases. As we have seen in the previous games of the Lloyd Challengers, they have lost their games in this middle juncture. Just that the opposition has taken the game away from them. So this 11 to 15 kind of phase is very crucial. 90 for the loss of 417 required in 58. Once you get a boundary, try and tick all the boxes. Try and maneuver the ball around. Nicely bowled. Looking for a quick single chance. No, not quite. Brusaj Tadavlikar will just be one. 6 of first 3 deliveries. 3 more deliveries in this particular over, in this spell of Iftikhar Aga. Pravin Gauss left it alone. That will be wide. Extras. ACL 2025-26 season 7. Double header today as the risers up in the air, and that's put down. Was in the air for a bit, and that fielder made all the hard work. Lost it in the air, might have been, and Pravin Gauss, the skipper, survives. Well, this could well change the entire scenario of the game if he sticks around and he gets something to his muscular power. He can take the game away from you. Short delivery played off the back foot. Will get one. Chance gone on that occasion. Iftikhar Aga would have had his third. Again, this time in the gap. But the fielder is there for the protection on the fence. Single will mark the end of the 11th. It's 95 for 4. 95 for 4 after completion of 11 overs. Legal Titans.
Dattaprasad Shirodkar has been brought in to try and create some inroads now. 95 for the loss of 4 wickets after 11. 112 required in 9 overs. The run rate is creeping up a bit. Pravin Gauss and his partner Sachin Ramnathkar need to try and negotiate this difficult juncture of the game. Full toss. And that's gone for 4. Full toss delivery and gets hammered. You get a boundary on the very first delivery, and then the pressure builds on the bowler. Swing and a miss, missed by the wicketkeeper. Will come back for the second. Pravin Gauss. Excellent running between the wickets by signal given. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Live coverage done by him for the entire tournament. And also so many tournaments across Goa, especially the leather ball tournaments. Shubham Naik and his entire team. Very good graphics that we can see on YouTube. Bhagyashree also providing some images with her iPhone 17 to the media, flaunting her iPhone 17 just before few hours back, showing some different features of the camera. Swatted it down the ground, down to Rusaj at the long on fence. Single taken. If this game goes in the favor of the man in black, that is the Lawyer Challengers, then the table will open up. Nicely played. Will just be another single. 103 for the loss of 4 wickets. Last delivery of this 12th. Will go down towards the mid-wicket region, and that will be a single. Single to India after completion of 12. It's 104 for the loss of 4 wickets, requiring another 103 in the next 8 overs. 103 required.
Here's Harsh. Off the back foot, no proper timing. Down to deep backward square. Coming back for the second. No, just settling for one. Good return from the boundary rope by that fielder. Just a single take on 105 for 4. 102 in 47. Just to get it under that 100 mark. Then try and cut down to 15-20, 15-20 every over. The man in blue. Advancing down the wicket. Big shot coming. And it has, put down. Vrusaj Lotlik of all people. Putting it down. You don't often see that from him. Easy chance. Straight in and straight out. Today, 2 catches dropped by him. Again, opportunity for him. Salvage himself. Takes a blinder on the boundary rope. He is animated with that. And why even be? What a effort that is on the fence. And dismisses the opposition skipper with that boundary, with that catch. Excellently taken. Absolutely need that stroke from the skipper. Maybe would have been trying to play it on the onside, maybe towards the mid-wicket cow corner region, not towards the long on. It's a long boundary. Harish among wickets. Nicely played. Looking for a quick single. Chance of run out. Oh, would have been gone if that would have hit. But wasn't to be. And straight away the skipper Chigwan changing that fielder. Replacing himself on that boundary rope and bringing Vrusaj inside that 30-yard ring. Nicely played. Down the ground. Will get a single. Try and take it as deep as possible. That could be the message, or that could be the game plan of Sachin Ramnathkar. Sorted away. Down on the deep mid-wicket fence. Will be just one. Single 20 over after completion of number 13. 13 overs done. It's 109 for 5. 109 for 5 after completion of 13 overs. 98 required in 7. Of lower challengers. Usually we saw the main bowlers DP Achut Chigwan bowl the initial overs and end their quotas of 4 for 8 overs.
Gone. Knocked him over. Quick delivery. No chance for Prasad to cut that. And he's gone. Sixth wicket down. It's completely changing the bowling lineup as keeping the main bowlers at the back end. Spinners in operation. Iftikhar bowled brilliantly earlier on, and now DP has just now got rid of Prasad. Good delivery, excellent delivery. Why were they appealing for? Got a big bat. Maybe just to unsettle the batsman. 109 for 6, 98 required in 40 deliveries. Just that the wicket of the skipper Pravin has put them in trouble. Absolutely needless stroke down the ground. You needed to be playing, if you are going aerial, would have been playing towards that mid-wicket square leg kind of region, as that is the shortest boundary. Wrapped on the pads, maybe missing leg, maybe would have been going away. So far has been pretty tidy over this. No runs conceded, got the wicket on the very first delivery, and since then 3 dot deliveries for Gaurav Borkar. Lets it go. That will be wide. Fumble from the wicketkeeper. Wants to come back for the second. And that will be gone. Another harakiri that has been done by the batsman. Looking for the second and is well short of his crease. Gaurav Borkar also departs. It's 111 for 7. New man in, Kanaya. Kishan Kanaya. Good delivery, excellent delivery. Just that wide and then that run out. 7 wickets down, tottering at the moment. The legal Titans. Nicely worked off his legs. Straight to the fielder. Dot delivery, terrific over coming to an end. Just the 2 coming from it. A wicket as well and also a run out. 111 for 7 after 14 overs. Legal Titans.
Harsh will continue. Nicely played. Will get a single. 95 required in 35 deliveries. Can someone storm past? Can someone play a match-winning innings from here on? Nicely played off the back foot by Kanaya. Will just be another single. 113 for 7. Almost towards the 15th over mark. I thought 150 would be that score if they get towards that 14-15 kind of over. And then trying, oh, gone through and gone for 4. Gone past the fielder at covers. Diving effort from Risaj, but it can't stop Sachendra. Moved away. Chandramnathkar again looking for the second. Scampering back. And will come back easily. 119. 88 in 32 deliveries. Oh, stumping opportunity missed. Would have been gone. Skipping down the wicket, missed out. Dot delivery nevertheless. Well, the middle overs, the middle phase was completely controlled by the loyal challengers. Wrapped on the pads and gone, given. Another wicket falls. Looking for the cross-batted hike on the onside. And the 8th wicket down. Sachendra Nathkar departs. It's 119 for 8 after 50. Nadeem Ahmed steps in to tell you more about the remaining 5, as currently the legal titans are almost towards the back end with only 2 wickets remaining and a mountain to chase down, 88 requiring in 5 overs. आठ विकेट के नुकसान पर बाकी बचे अब 2 आखिरी विकेटें जो कि लीगल टाइटंस के पूरी तरह से इस मैच पर कब्जा जमाया है टीम लॉयस चैलेंजर्स ने। लगातार विकेटें चटकाते हुए बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा। बढ़िया ड्राइव, इसी बीच एक रन की कोशिश थी मगर गेंद बिल्कुल फील्डर को पाई। तो पूरी तरह से बिल्कुल इस मैच पर कब्जा जमाया है लॉयस चैलेंजर्स। आज का बेहतरीन परफॉर्मेंस हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो या फिर हो बल्लेबाजी, कमाल का क्रिकेट आज लॉयस चैलेंजर्स की ओर से देखने को मिलता हुआ। बिल्कुल एक मजबूत टीम उभर कर सामने आती हुई श्रृंखला की।
आज केवल चौथा दिन, मगर काफी टीमों ने अपना लोहा मनवाया है इस मैदान पर। उनमें से एक लॉयस चैलेंजर बिल्कुल खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद बिल्कुल रफ्तार पकड़ते हुए जा सकती है सीमा रेखा पार, जा चुकी है 4 रन। कोशिश अभी भी जारी लीगल टाइटंस की ओर से, मगर निश्चित तौर पर अब काफी देर हो चुकी है, केवल 2 विकेट हाथ में और अभी भी काफी लंबा सफर जो कि कठिनाइयों से बिल्कुल भरपूर रहेगा। गेंदबाजों की जिस प्रकार से गेंदबाजी रही है, कमाल की। इफ्तिकार आगा, अचित सिगवान स्वयं कप्तान, कुछ विकेट लेकर अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में करते हुए। तपसा शिरोडकर एक संपूर्ण खिलाड़ी, ऑलराउंडर, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग, तो यही ताकत है लॉयस चैलेंजर्स की। ऑलराउंडर से भरपूर टीम। उछाल भरा शॉट, मगर फील्डर को पाया एक्स्ट्रा कवर की दिशा की और एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर के खाते में। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 126। अपील वहां पर एलबीडब्ल्यू के लिए, मगर कोई दिलचस्पी ना दिखा, तो काफी करीबी मामला था, बिल्कुल कोई संपर्क नहीं बल्ले का। शुभम गड़ेकर का स्वागत कॉम्बॉक्स में आ चुके हैं गैलरी में। इसी के साथ 16 ओवर समाप्त और 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 126। 8 विकेट के नुकसान पर 207 रनों का पीछा करती हुई टीम लीगल टाइटंस। ये अच्छी बल्लेबाजी की जब तक गौरव बोरकर थे, उम्मीद थी जीत की। जैसे ही जेसन गिल्स्पी आउट हुए, फिर उस पर मैच का रुख बदल गया। हर्ष की गेंदबाजी 17वीं ओवर जारी है। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका हो सकता है मगर हल्का सा मुश्किल रहेगा। दोनों ही फील्डर ने कहा 13 है और कैच बिल्कुल दोनों के बीचों बीच गिरता हुआ। हालांकि रुसाज तलावलीकर वहां पर, जिन्होंने आज कमाल की कैच लेकर एक नया परिचय दिया है अपनी फील्डिंग का। गेंद हवा में, फिर भी मुश्किल रहेगा कैच के, मगर कम से कम 2 रन की यहाँ पे रहेगी कोशिश बल्लेबाजों की ओर से और मिल भी जाएंगे। तो अभी भी कोशिश जारी है, बिल्कुल कभी ना हार मानने वाली टीम है लीगल टाइटंस, मगर यहाँ पर कुछ लंबा ही स्कोर बना चुके थे लॉयस चैलेंजर्स, जो कि 200 के पार सबसे हाईएस्ट अब तक का इस श्रृंखला का, यानी कि सीजन 7। मगर फिर भी कोशिश जारी है, नहीं पहुंच पाएंगे लक्ष्य तक। तो देखना होगा कि जिस तरह से ये टूर्नामेंट इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है, हर रोज दिन ब दिन, हर मैच बाय मैच, कौन सी 2 टीमें भिड़ेंगी फाइनल के मुकाबले में। बढ़िया स्क्वायर कट, 2 रन मिल सकते हैं। और वहां ना इसी बीच मगर थ्रो आ चुका है, मिल सकते हैं अब 2 रन या फिर 3 भी। जी हाँ, ये बेहतरीन रनिंग का मुजाहिरा। कभी कभी ऑफर भी आता है फेस्टिवल सीजन में, बाय 1 गेट 2 फ्री। उसी प्रकार से ये रन भी एक ले लिया था, ऊपर से 2 मुफ्त।
हालांकि अक्सर होता है कि बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, यहाँ पर बाय 1 एंड गेट 2 फ्री हो जाए। कोशिश वहां पर गेंद तक पहुंचने की, मगर जैसे ही जाना कि नहीं पहुंच पाएंगे, अपने आप को संभाला और अच्छी फील्डिंग है। अक्सर वो निर्णय लेना होता है फील्डरों को कि कैच के लिए जाएं, फिर रुक कर या फिर गेंद को रोकें। तो अच्छी फील्डिंग, अपने आप को रोक कर गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन दिया बल्लेबाजों को। बढ़िया शॉट जो कि लॉन्ग ऑन दी दिशा की ओर खेला गया। सबसे मजबूत यूनाइटेड ब्रदर्स और उभरती हुई लॉयस चैलेंजेस 18 जूनस बिल्कुल पकड़ बनाती है इस टूर्नामेंट में। और किसे मारती 17। क्रिकेट लीग की बात आती है, गोवा के सारे एडवोकेट्स के चेहरे पर खुशी का माहौल होता है, क्योंकि यह एक त्योहार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एडवोकेट का प्रोफेशन कितना हेक्टिक होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हर एक केस के पीछे कितना होमवर्क करना पड़ता है। मगर इन सभी एडवोकेटों को सलाम को, जिस प्रकार से वे अपने वक्त को आगे पीछे कर एडजस्टमेंट कर इस मैदान पर आते हैं, बावजूद अपने काम के, तो उस एडजस्टमेंट को मैं कहूंगा सल्यूट। कभी स्वयं या कभी अपने जूनियर को भेज केस की पूरी निगरानी रखते हैं ये सारे एडवोकेट्स, और सभी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश, सत्य के लिए झगड़ते हैं। पटकी हुई गेंद इस बार हल्की सी बाहर को जाती हुई अच्छी गेंद के साथ शुरुआत 18वीं ओवर की। स्वयं कप्तान फिर से एक बार गेंदबाजी करें में अच्छे सिगवान, जो कि चिकालिम सर्कल इनकी ओर से शुरुआत कर चुके हैं 18वीं ओवर की। अभी भी लंबा सफर जो कि 207 का लक्ष्य का पीछा कर रही है, मगर नहीं पहुंच पाएंगे, कोशिश जरूर जारी रहेगी। बिल्कुल ब्लॉक में गेंद, फुलर ऑन खोद निकाला है गेंद को, केवल 1 रन का यहां पर मिलेगा सहारा बल्लेबाजों को। सुंदर गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी, 46 गेंदों में 73 रन बनाए हैं, यानी कि 73 runs of just 46 deliveries was a brilliant swashbuckling knock from the captain Ajit Sigwan of Lois Challenges. Oh, scoop beautifully done. दिल स्कूप 4 रन डीप फाइनल की दिशा की ओर। रत्ने दिलशान की याद दिलाई स्कूप ने। दिल स्कूप जिसे कहते हैं T20 में, रिवर्स स्विच केविन पीटरसन, हेलीकॉप्टर MS धोनी, रिवर्स स्वीप ऑन द बेंडेड नी AB डिविलियर्स, बिग शॉट्स बाय क्रिस गेल्स। इस प्रकार के काफी इनोवेटिव शॉट्स को बनाया है T20 ने।
दोनों से बीच बिल्कुल ऑन द फ्रंट खेल दिया है कवर्स की दिशा की और एक रन से समझौता करना होगा बल्लेबाजों को। इक्का दुक्का रन के साथ अब केवल इस मैच की औपचारिकता बाकी रह गई है। इफ्तिखार आगा सबसे बेहतरीन फील्ड में, एक बेहतरीन कैच भी उनके नाम, और उसी पोजीशन पर उन्होंने सुंदर कैच ली थी और इस टूर्नामेंट का सबसे पहला बेहतरीन कैच इफ्तिखार आगा के नाम। और इस बार कोई फुटवर्क नहीं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, हाना हाई से बीच हल्की सी फंबल के साथ एक मौका मिलता हुआ रन का, विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी चूक और उसी के साथ ओवर की समाप्ति भी। 18 थोड़ी सी ठंड ने असर किया है मेरी हेल्थ पर भी, मगर फिलहाल विकल्प यहाँ पर थोड़ा सा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। हालांकि इस मैच में शायद नहीं जीत पाएगी लीगल टाइटंस, मगर मौके और भी बहुत हैं जीतने के। मगर आज इस प्रकार से लॉयस्ट चैलेंजर्स का प्रदर्शन रहा काबिल तारीफ। बैक ऑफ हैंड इसी बीच दत्ता प्रसाद शिरोडकर की गेंदबाजी, 19वीं ओवर जारी जो की रहेगी, सेकेंड लास्ट ओवर। खाना लग चुका है, जिस किसी को भूख लगी है खा सकते हैं। फुल टच गेंद, कड़ा प्रहार, गेंद बिल्कुल फील्डर के पास, कैच छूटा, दत्ता प्रसाद का दिल टूटा, और कोई नहीं। जब कभी दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, हाँ बिल्कुल आंसू निकल जाते हैं। कोई नहीं, कोशिश करते रहना ही कार्य है, और वही करते हुए दत्ता हुई, तकदीर का लिखा कोई नहीं छीन सकता। हर एक समय पर मैच डिसिप्लिन के टूर्नामेंट होते हैं, डिसिप्लिन के टूर्नामेंट होते हैं। बढ़िया शॉट, मगर गेंद को शायद रोका जाएगा। एक 2 रन की कोशिश, हाँ ना। It's just a fielding that I feel that we have lost this match. It's just a fielding that I feel that we have lost this match. Catches had to be taken early on, that would have brought definitely pressure on the lowest challenges. Yes, definitely. They could have come under pressure.
if we have taken those chances in the time where we have lost, slip the match from our hand. Tough luck, better luck next time. Have a good one. So, Praveen Gawas, the captain of Legal Titans. Yes, let's have a word with
Chetan, Dattaraj, Dattaprasad Gavas, Vaibhav Vilas, Sandeep, Rohit, and Rajendra Shetty. That's a lineup for Lotlik Lines. The lineup for Rises goes as follows: Anup Kuttarkar, the captain, Abhinav Marathe, Pritesh Shetty, Dattaraj Arundekar, Akash Kesar, Abhishek Davaskar, Vaibhav Pagi, Harsh Parik. And are you ready? Followed by Shubham Gadekar and Sandeep Naik. Completes the team. Oh, quick rise there. The ball has gone past the wicket keeper. Good footwork. Little bit of football on the cricketing field. Yes. Definitely it was a dodging. Not with the football, but with cricket ball. At all good footwork, and then not allowing the ball to go past to the boundaries. Good work in the end by the fielder. Vilas, a very good footballer. My pleasure to have such a wonderful batter in the com box, Sandeep DeMello. Yes, absolutely. Enjoying the view from the gallery and appreciating it. Fast field, no chance for a single. Just trying to open up slowly but surely. Kalpesh Kamath KK on strike alongside the captain Anup Kurtadkar. On the back foot appeal, half-hearted. Not really didn't really have that punch, that confidence in the shout for LBW. Oh, appeal this time. Completion of the first over. Maiden over, but 2 pies. Score is 2. The distance
beating the short fielder in the square leg. Almost reached. At least should have left to the captain to hold on. Easy opportunity going down vertical lines. That would have been a big benefit for sure. This will cost them dearly in the long run. The first of Balance. Nicely done by Nope. Beautifully played away. Single quite comfortable. And how easily he converts every ball into singles and twos. Keep going. That's the beauty of Anup Kutturkar, the captain who leads from the front and leads by example. And example is the best language to convey the message. And that is exactly how Anup is leading the team of Rises since a long time. Wonderful captain. Oh, nicely finds the gap. The ball will race away. Beautifully picked up by Kamlesh Kamath. KK fires it once again into the gap to get the boundary. Getting boundaries. Once again, marshalling his resources, deploying his troop right into the work of the captainship is Gajanan Korgaonkar. Back of hand, another opportunity. Take this time. Takes it. Kamlesh Kamath is out, the first wicket down of Rises. Much needed wicket for Lotlik line. Abhishek Davaskar, a new man joins in, a very promising player of Rises. Oh, just wanted to slice the ball, quick rise there, good stop by the wicket keeper. Must have hurt in the bargain, but he's okay. Look at the attitude. Mard ko dard nahi hota by the wicket keeper. Very strong man. The ball hitting right directly on his shoulders. He just dusted it away. No pain. That was a close. That is close for sure. The ball kept low. Didn't quite come to the expectation of the batter. Confidence looking shout. Just lost a wicket. Rises. And that was the captain's wicket. That could have been, if had given LBW, that would have become a major jolt for sure. That would have been a prize wicket for the Lions. They know how dangerous Anup could be if he survives for a long time.
Oh, missed it completely. The ball, not only the bat, wicket keeper, the fielder, everyone it missed and raced away to the fence. Bye and bye bye. That's boundary. The lunch is served. Players hungry can pick up a coupon and grab the meal. Oh yes. Oh, this time is wrapped up right on the money. Anup Kulkarkar is out, missed it completely. The captain departs and a much needed wicket for Lotlik Alliance. The prize wicket for sure. Made a mess of that. It was right. Yes, no, stranded right in the middle of the pitch. Which way to run? And it was quick work, but just missed the target. Lady Luck smiles on the batters of Rises. Gets an opportunity. Survived to play better. Once again, and no, absolutely, the calling is not really working well. In the meantime, it's in the end of the over. 2 hours complete. 3 hours complete.
take that another wicket. Risers lost their third wicket in just the fourth over. The wickets are falling very quickly of Risers. Someone is required to stay and play a long inning. A partnership is definitely needed. So the fall of the wickets one after another. First to depart Kamlesh Kamath, Anup, and then the third batter to depart, Akash. The big boy, Rohit Desai. That was a hat-trick ball. Lions are roaring on the ground. Lions hunted thrice, picked up 3. And absolutely the proud pride of Lions, bubbling with confidence. Now is the time for the batters to just settle down with singles and twos. And the big boy, Rohit Desai, has the ability to play long and sensible inning alongside Abhishek. Gavaskar. A lot depends on Abhishek as well, because yesterday he showed his mettle, what he is made up of, full of confidence. One partnership will be very handy here for the Risers, batting first after winning the toss. Trying to put up a good total, but with this fall of the wickets, things are a bit difficult now. But not impossible. Look at the bowling, dominating bowling continues from the bowlers of Lions. Lotlik Lions are making a great comeback in the game after yesterday's loss. Nicely played away. The ball has gone past. That will be a boundary for sure. Akash puts it away, finds the gap, finds the boundary.
Not a regular wicket keeper for Lotlik Lions. Watchful. Yes, is a call and well responded by Akash Davaskar. Abhishek Davaskar. Can he prove his mettle again in this match? Batting. What a find for Rises. Abhishek Davaskar. Across the bat, loud shot, confident appeal. But umpire unshaken, no matter what. Even if the wind blows at a speed of 160 kilometers, he will still be standing straight, unshaken. On the back foot, just wanted to slice it, a little bit of a rise there. Just taken the bat off. Definitely there is pressure on the batters. And the bowlers would like to continue putting pressure. They would like to keep on doing that. Till the time they pick up a few more. But nice work by Abhishek. Picked up a single. Just wants to rotate every ball a single at least. Keep the momentum going. That is the need of an hour for Risers. Just to rectify the damage done by the bowlers early on of 3 wickets. Kamlesh Kamath, Anup and Driver's seat at the moment are the Lotlik Lions with those 3 early wickets. Wrapped on the pads, maybe might have been just slipping away. So far that strong hold has been applied by the bowlers of Lotlik Lions. Completely taken the upper hand with those 3 early wickets. 29 for the loss of 3 wickets. 6th over in progress. Short delivery up in the air and taken. Robin taking the catch, and that short delivery, a bumper, couldn't quite control it well. Another wicket gone, 4 wickets down. 29 for 4 and tottering at the moment. The Risers. Vaibhav. And in total 4 wickets. Abhinav Marathe, the new man in.
Well, these two men in the middle need a partnership now to get their team out of danger. 29 for 4, sixth over in progress, last over of the power play. False start. Vijay Kumar Reddy along with Abrar Khan, the two bosses of this game, the two officials, looking upon the proceedings of this particular encounter in this ACL Season 7. Nicely turned around. We'll get a single, but it's running towards the fence and it's approaching towards the boundary. It's even getting faster. Gets off the mark with the boundary. Score moves to 33. Is very important right now as far as these two batsmen are concerned. Not much of the betting to come, so they need a formidable bit of partnership. Again, excellent delivery, hurrying the batsman. Chance of run out? No, not quite. Would have been much more earlier. Some urgency shown by that fielder would have been a different story. Another single taken. Score moves to 34. Fourth over in progress. All 4 wickets. And all the 4 batsmen tried to hurry things. Didn't play on the merit of the delivery. Rushed things. Nicely played. Belted. Straight to the field though. Venkat. Now the dot delivery. Looks a very good prodigy. Venkat bowls, bats really well. Needs to be utilized well in the 20 over format. Again, straight to the field. Dot delivery to end the over. Done with the power play. 6 overs done. 34 for the loss of 4 wickets. Risers. Change in bowling, it will be Kunal from the swapping ends, this time from the airport end. Slight change in the field, wants that man behind square towards the short fine at short 45. Nicely tucked around. Good bit of footwork, hesitation between both the batters. Yes, no. And eventually make that run.
Not good signs when you are hesitant, you have doubts in your mind whether to come or whether to be there at one end. Another excellent delivery. Cramping him for room is the left arm, so that one which goes on with the arm would be a difficult delivery for the right-hander to tackle with. Falls in no man's land. Down to Chetan Sangelkar. Will just be one. Another single taken. Need to try and rebuild the partnership, try and rebuild the damage that has been done earlier. 4 wickets already gone. It's gone through, but that will be a wide extras. The one which he tries to give some more bit of rip. Kunal. Nicely played and will get a single. Another single taken. All these games live on YouTube through Photosonic Productions. Let the ball coverage of this particular tournament with the Advocates Cricket League Season 7. Dead bat onto that one. Dot delivery to end the 7th. After completion of 7 overs. It's 38 for 4. Rises. Thank you to all the patrons of the Advocates Cricket League, Desert and More, Sherwin Shaw, Internet Express, Jamson's Estate Private Limited, Priority Constructions, Mustafa Collections, Bali Resorts, Prescon Homes Private Limited, Chirag Datta Naik Initiative, Manas Developers, Confiteria 31st January Bakery, Evison Infra, Felicity Group, Real Drinks, Hype. Best compliments from Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlikar, Advocate S.N. Joshi, Advocate Gajanan Korgaonkar, Advocate M.S. Joshi, Mr. Viraj Paras. We'll come back to that as Chetan Sangelkar has been introduced. Nicely played again, dot delivery. Mr. Lalji Deboya, Mr. Balkrishna Hodarkar, Mr. Siddesh Amonkar, Iqbal Mohiddin, Prasad Sheth, Vijay Patil, and the Hardwal Palkal Constructions developers. Swing and a miss, trying to charge down to the bowler. Too many dot deliveries sometimes can get in your head, so try and do something different, and that's when the bowling team tries to get a wicket.
And rightly so, the pressure is created right now. Again, this time trying to cut. Missed again. Three deliveries. Gajanand Korgaonkar just putting his third man back on the fence. This time down the leg side. Straight to the fielder. Again, a bit adamant. The running between the wickets by these two. No proper calling. You need to have a proper calling. Unless and until that, you definitely can lose a wicket. If the close-in fielders are that much agile and that much active. This time down the ground. On the bounce to the fielder, but a fumble from him, but will just be one. Not the single taken so far, just the 2 runs of this over. Nicely played. That's more like it. You need to push. 3 of the over after completion of the 8th. Change in bowling, it will be Pankaj Naik. 41 for the loss of 4 wickets after completion of 8 overs. Rises. Just trying to play the lap. And a very good work by Robin. Trying to field it with his hand, but his boot got in the way. He'll take it. Nicely played. Looking for a quick run. Chance of a run out. Oh, what happened there? Well, the throw didn't come as the wicketkeeper would have expected it to come. He would have just flicked it onto the stumps, then would have been close, but no. He lost his balance and chance gone begging. Release of life for the tall batsman. Again, that calling hasn't been proper. Would have been an opportunity, but very lucky. Big hit in the air. Fielder coming underneath and going away from his reach. And that will be a boundary. A release shot on that occasion. Straight away, that fielder has been swapped to Venkat.
This time back past the bowler. Very quickly down to the fielder at long off, Chetan Sangelkar. Just one. And this time a much flatter trajectory and a bit short dot delivery. Nicely played. Off the back foot, too much work for the fielder. Sliding effort and excellently done by Vaibhav. 2 more runs added. Bowled is 3 overs and now commitment in the field. Excellent. And with that, 50 up for the Risers. 50 for the loss of 4 wickets. We are into the 9th over. Nicely played. No chance for that fielder. That's gone for 4. Short delivery and gets thumped. 54 for the loss of 4 wickets after completion of 9 overs. Risers. Six runs every over. Currently 54 of 9 overs. 54 for the loss of 4 wickets. 9 overs done. Chetan again from the airport end. Gurgaonkar just redirecting his field. Maybe wants some extra protection. Now getting the third man in. Batsman not happy with something. Maybe he wants that fielder not exactly towards his eye line, and he cannot move if that fielder is exactly into his eye line when the bowler is delivering. False start. Convincing bit of victory in that previous game for Lower Challengers. Nicely played down the ground. On the bounce to the fielder. Maybe that plan of Gajanan Gurgaonkar would have worked, as that extra fielder has been posted. Abhinav back on strike now. Now some more changes in the field, as for Abhinav, that man at short mid wicket is inside the ring. Just gone away from his reach, and that will be a boundary. No chance for that fielder at covers. It's gone for 4. So showing some positive signs now, Abhinav Marathe with that boundary.
Nicely played. Touch and run and get a single. Not the single taken. I talked about building a partnership. These two are complementing each other. Just that the calling hasn't been proper. Need to improve it. Apart from that, everything looks focused. As far as the man in purple and dark blue are concerned, they will try and break this partnership at some point. As these two very muscularly, powerfully built. Down the ground to the fielder. Has he found the gap? Yes, he has. Poor effort on the boundary. And that will be yet another boundary. Second boundary of the over. Touch expensive right now with Chetan. So moves to 64 with that boundary. Good delivery right in the block hole. It's much fuller. Down the ground. And that's gone over. Onto the side screen. A maximum to end the over number 10. After completion of 10 overs, halfway stage, it's 70 for the loss of 4 wickets. रोहित देसाई और काफी कुछ निर्भर करेगा इस साझेदारी पर 4 विकेट खोने के बाद, मगर जब साझेदारी बनाते हैं बल्लेबाज
तो देखने लायक साझेदारी रहती है, और यही साझेदारी बिल्कुल इक्का दुक्का चौका छक्के के साथ बिल्कुल एक अच्छा लक्ष्य बना सकते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में बदलाव और गेंदबाजी में आए हैं रॉबिन। हल्की सी फील्डिंग में बदलाव करने की कोशिश, उनका कप्तान का साथ लेते हुए काफी सारी फील्डिंग में बदलाव। बिल्कुल जीतना चाहती है मैच लोटलिक लायंस, तो कोई कमी न रह जाए इस बात का को पूरी तरह से सुनिश्चित करते हुए कप्तान गजानन। वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी कॉलिंग रोहित की। आज बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी अभिनव मराठे को, और बिल्कुल करते हुए एक अच्छे लय में नजर आते हुए संयमशीलता के साथ इक्का दुक्का रन रक्षात्मक तरीके से खेला एक रन के लिए। धीरे धीरे इक्का दुक्का रन के साथ बिल्कुल लंबी पारी खेलने की फिराक में दोनों ही बल्लेबाज। और देखिए स्थिति को इस तरह से संभाला जाता है। हालांकि 4 विकेट काफी जल्द गिर चुके हैं राइजर्स के, यहां तक कि अभिषेक तावस्कर जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी आउट। चौथे नंबर पर कमलेश कामत, अनूप, आकाश और फिर अभिनव दावस्कर। ये 4 विकेटें जो कि राइजर्स की गिरी है काफी जल्द। बढ़िया शॉट, बढ़िया ड्राइव, मगर गेंद और ये 4 रन। आखिरकार एक चौका मिलता हुआ, बिल्कुल गैप ढूंढ निकाला था, पूरी कोशिश की वहां पर, मगर गेंद को नहीं रुक पाए फुटवर्क के साथ, और एक चौका जो कि राइजर्स के खाते में जुड़ता हुआ। रुबीनो सुंदर गेंद, मगर संभल कर खेला है बिग बॉय रोहित देसाई ने। जब टीम को जरूरत है, जब टीम को किसी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है, रोहित देसाई एक फरिश्ता बनकर बिल्कुल उतरे हैं क्रीज पर और अच्छी बल्लेबाजी करें। उनका साथ निभाते हुए अभिनव मराठे, जो अक्सर खेलते हैं गेंद के साथ कराटे। बढ़िया स्विप शॉट, टाइमिंग जबरदस्त, मगर फील्डर को पाया पंकज, जो कि डीप स्क्वायर लेग में मौजूद। हालांकि फील्डिंग भी काफी बेहतरीन रही है लॉटलिक लायंस कर गेंदबाजी की, तो फिर क्या बात है कि जिस तरह से 6 पावर प्ले ओवर में 4 विकेट लेकर बिल्कुल बल्लेबाजों को बैकफुट पर ढकेला है राइजर्स के। और मेरे बिल्कुल बगल में बैठे हैं मेरे अच्छे दोस्त कल से हर्ष सावडेकर राइजर्स के। जानकारियां देते हुए इस बीच मुश्किल रहेगा गजा के लिए, कोशिश जबरदस्त की मगर नहीं पहुंच पाई गेंद तक। 1 रन और 1 रन जुटता हुआ स्कोर के खाते में, धीरे से स्कोर को पहुंचाता हुआ 78 रनों पर 11 ओवरों की समाप्ति। 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई राइजर्स। एट 11 ओवर की समाप्ति के बाद
आज सुबह हमने देखा कि लॉयस चैलेंजर्स ने अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर अपने स्कोर को डिफेंड किया। लीगल टाइटंस के विरुद्ध में। क्या शानदार प्रदर्शन स्वयं कप्तान अचित सिगवान का रहा। बढ़िया शॉट, कैच का मौका इस बार। आसान सा एक लंबी पारी पर रही थी, दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर हवाई यात्रा पर भेज दिया था गेंद को, फील्डर को पाया और फील्डर ने इस बार कोई गलती नहीं की। इस प्रकार बने हैं 23 गेंदों में। बिल्कुल बल्ला ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, उठा के बल्ला कर दे हल्ला। बल्ला बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी उनके साथ निभाया, अपना योगदान दिया इस अपनी बल्लेबाजी से 30 रनों का। नए बल्लेबाज जो कि जुड़े हैं 7वें नंबर पर दत्तराज अरुंदेकर। काफी दत्तराज इस टूर्नामेंट में, दत्तराज परब, दत्तराज गावस, दत्तराज अरुंदेकर और एक दत्ता प्रसाद शिरोडकर। हाउ मेनी दत्ताज इन स्टोर? और इस बीच गेंद बिल्कुल निकल चुकी है। बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं विकेट कीपर को कि कहां से आई है कहां से निकल गई है। और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, एक रन आंखों में देखकर चुरा लिया। अच्छी गेंदबाजी गजा के। कप्तान टीम लोटलिक लायंस के, भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। बिल्कुल ऑन द फ्रंट। एकमात्र बल्लेबाज जो डटा है, टिका है, अभिनव। शॉट ऑफ लेंथ, क्लाइव का खूबसूरत इस्तेमाल किया, फाइनली की दिशा की ओर गेंद को भेजा। 4 रन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सुंदर हाथों का कमाल, रिस्टी वर्क फ्रॉम अभिनव। मैचों का सिलसिला फिर से एक बार
प्रारंभ होगा इस खूबसूरत मैदान पर। रामकृष्ण गेंदबाजी में कलाई का खूबसूरत इस्तेमाल, मगर खेल दिया बिल्कुल गेंदबाज की ओर। दत्तराज अरुंदेकर अभी एक अच्छे बल्लेबाज, एक ऑलराउंड परफॉर्मर, राइजर्स के एक एसेट। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, फील्डिंग में महारत हासिल इस खिलाड़ी को। बिल्कुल 2 माइंड में थे खेलने के लिए, मगर आखिरकार गेंद को जाने दिया। अभी भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश हर एक विकेट के साथ गेंदबाज। उसी बीच 1 रन का इजाफा धीरे से। हालांकि 13वीं ओवर जारी, इसके बाद अभी भी 7 ओवरों का आना बाकी। स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 86 रनों पर। फिर से एक बार बिल्कुल बेंडेड नी पर दिशा दी फाइन लेग की ओर। 2 रन आसानी के साथ, 3 रन। जब तक गेंद को पैर से रोकने की कोशिश करते, 3 रन का मौका मिलता हुआ स्कोर 88 पर जा पहुंचा है। मैदान पर 2 अंपायर अबरार खान के साथ विजय कुमार रेड्डी, मैं नदीम अहमद मेरे साथ, शाम कलंगुटकर कॉम बॉक्स में, थर्ड अंपायर इम्तुज शेख। स्कोरिंग डिपार्टमेंट में बाप बेटे की जोड़ी शैलेश नाइक जो कि मैनुअल स्कोरर, यश नाइक उनके सुपुत्र, और डिजिटल स्कोरर डीजे योगेश नाइक। और साहिल, और एक मौका जो कि जाता रहा विकेट कीपर के स्थानों से। और इसी बीच बिल्कुल देखते ही देखते काफी सारे रन। रॉबिन बिल्कुल गुस्से से, बहुत नाराजगी व्यक्त करते हुए 91 13 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। अगर डीजे की बात की जाए तो मोटू पतली ही जोड़ हुई है। तेरह ओवर समाप्त 91, 5 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार कप्तान गेंदबाजी में गजानन कोरगांवकर, चिकालिम सर्कल एंड की ओर से। पटकी हुई गेंद इस बार कला का खूबसूरत इस्तेमाल किया, डिस्कोले की दिशा की, वहां पर मेहनत करनी होगी, असफल। रफ्तार पकड़ती हुई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए पहली गेंद पर करारा शॉट दत्तराज का। दत्तराज अरुंद करके दिशा दी बिल्कुल डिप स्क्वायर लेग में। पटकी हुई गेंद इस बार फ्लैश कर दिया है और एक चौका मिलने की संभावना। गिव अप कर चुके हैं फील्डर, और एक चौका दत्तराज अरुंदेकर
उन्होंने अभी अभी कहा था कि ये बंदा बिल्कुल बंदे में है दम। वंदे मातरम। राजा रुंदेकर स्कोर देखते देखते 99 पर पहुंच चुका है। हंड्रेड फॉर राइजर्स। 100 रन पूरे हैं। 103 पर राइजर्स लगातार हैट्रिक बना दी है चौकों की। दत्ता राजा रुंदेकर ने क्या कमाल की बल्लेबाजी। की शुरुआत थी 91 था, अब 103, यानी कि 12 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। संभल कर इस बार केवल दिशा दी 1 रन के लिए। स्मार्ट बल्लेबाजी दत्ता राजा रुंदेकर की ओर से। अब तक कुल मिलाकर 13 रन 5 गेंदों में। आखिरी गेंद इस ओवर की 14वीं ओवर की प्रगति पर। कार्य अभी भी जारी है। तो 14 रन दे चुके हैं इस ओवर में और स्कोर को पहुंचा है 105। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के गेंदबाजी मिलाए गए हैं। दत्त प्रसाद गांवकर, दत्त प्रसाद गावस, दत्त प्रसाद गावस की गेंदबाजी है बिल्कुल स्क्वायर कट के साथ। 1 रन 2 रन की कोशिश, मगर केवल 1 रन पर ही समझौता करना होगा। अच्छी कॉलिंग वहां पर अभिनव की। अपना और अपने साथी का ख्याल रखते हुए अभिनव बिल्कुल एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए। जब टीम संकट में होती है तो संकट मोचक बन के बिल्कुल आ जाते हैं अभिनव मराठे। एक योद्धा खिलाड़ी, जानते हैं कि किस मोड़ पर किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। फ्लड अगेन, कैच का मौका। ओ यहां पर कैच छूटा। दत्त प्रसाद गावस का दिल टूटा। दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, आंसू आते हैं, और आंसू भी पी गए हैं गेंदबाज। मौका था इस बार। कमाल का बिल्कुल शॉट है ये। काफी इनोवेटिव शॉट के साथ बल्लेबाजी करते हैं अभिनव। अभिमान होगा टीम राइजर्स को अभिनव पर, और होना भी चाहिए इस प्रकार की बेहतरीन बल्लेबाजी जो करते हैं।
लगातार 3 गेंदों में 3 चौके। नहीं साहब, सही पकड़ बिल्कुल नहीं बनाई है, मगर 1 रन से ही संभलना होगा। बिल्कुल कंट्रोल एग्रेशन का एक बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए फिर से एक बार मौके की तलाश में, और जब मिलता है मौका मारते हैं जमकर चौका। कभी कभार 3 गेंदों में 3 भी देखने को मिले हैं। नपीतुली गेंदबाजी बिल्कुल रनों को सीमित किया है दत्त प्रसाद गावस ने, सही लाइन सही लेंथ के साथ। फुल टॉस पे बढ़िया ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, क्या 2 रन के लिए दौड़ेंगे? बिल्कुल दत्तराज काफी तेज बिजली की तरह। देखते ही देखते अभिनव सोच ही रहे थे कि पहुंच चुके थे दत्तराज अरुंदेकर, और इन 2 रनों के साथ स्कोर नेल्सन 15 ओवर की समाप्ति। नेल्सन 5 विकेट के नुकसान पर। For the loss of 5 wickets after completion of 15 overs. Last 5 overs remaining in this innings of Risers. These two have neutralized the danger that was that earlier. 4 wickets quickly. Then again a wicket fell, and Dattaraj along with Abhinav have got a partnership which has got their team into a very safe position now. 111 for the loss of 5 wickets. Last 5 overs remaining. Nicely played by Dattaraj, and will get a single, as Vaibhav Bandekar has picked up 3 wickets earlier on. 3 quick wickets at the beginning, and now into his 4th over, bowling from the airport end. That will be wide down the leg side. Extras. Nicely played. But the field taken. Excellent take by Pankaj. Skied up in the air. Short delivery, short and wide. And trying to hammer that one. And an excellent take. What effort that is. Excellent grab as Abhinav departs.
113 for the loss of 6 wickets. The risers, just now that the launching pad would have been set for the rest of the batters, lost a wicket of Abhinav. Left-handed Shubham Gadekar has walked out to bat. 113 for 6. Currently, projected score from here on around that 150, 145 kind of a mark. It's down the leg side. That will be wide. Extras. A big thank you to all the patrons of the ACL 2025-26 Season 7. After this delivery, we'll let you know who are the patrons. This time left alone. An extra run as well, and yet another wide. 2 more added. Visit and more. Sherwin Shaw, Ethernet Express, Jemson's Estate Private Limited, Priority Constructions, Mustafa Collections, Bali Resorts Limited, Chirag Datta Naik Initiative, Senior Advocate Carlos Alvarez Ferreira, Senior Advocate Suresh Lotlikar, Advocate S.N. Joshi, Advocate Gajanan Korgaonkar, Advocate M.S. Joshi, Mr. Viraj Paras, Mr. Lalji Deboya, Mr. Balkrishna Hudarkar, big chopper of the Indian Navy as it went by. Mr. Balkrishna Hudarkar, Mr. Siddesh Amonkar, Mr. Iqbal Mohiddin, Mr. Prasad Sheth, Mr. Vijay Patil. Nicely played. Looking for a quick run and will make it quite comfortably, and that is poor bit of cricket. No one backing up. Keeper let it go, and the batsman obliging with yet another run. Score moves to 121. Well, this has been a very lengthy over. So far 10 runs. The entire ACL committee would like to thank each and every one of them for their invaluable support. Nicely played. And another single into his last delivery. Bowled brilliantly apart from this over where he has given some extras. Vaibhav Bandekar, 4 wickets to him. Can he get another one on this delivery and make it 5? Gone. 5 wickets. 5 wicket haul for Vaibhav Bandekar. What an effort. What a bowling effort by the young man. Excellent bowling. That one came back in and gone through inside edge onto the stumps. So another wicket falls. It's 122 for 7.
122 for 7, 16 overs done. Losing wickets. 2 wickets in that previous over. Got his 5th wicket. Vaibhav. Datta Prasad will come on to bowl his second in team's 17th. Pritesh Shetty has just joined him at the non-striking end. Dattaraj Arondekar needs to take his team towards a substantial total now in the remaining 4 overs. 122 for 7. Nicely played. And low fumble from that fielder. And will come back for the second. Coming back for the third. Oh, chance of a run out at the non-striking end. Not quite. Got hit the batsman. Maybe onto his ribs. Hope they are fine. It's just over the tummy. Rib cage maybe. Just check whether your heart is in the right place. Has it got shifted? Sees the funny side. He's back again to face the next delivery. Dattaraj Arondekar. That will be wide. Too many extras at the back end of the innings given away by the Lotlik Alliance. Good delivery, nicely played. Some work for that fielder. Does well. Keeps it to a couple. 2 more added. Up in the air. Will fall in no man's land. By the fielder comes in, throws it back. 2 more runs added. Chance of run out of the keeper's end. No, not quite. Another couple of runs. Excellent running between the wickets by Dattaraj and Pritesh Shetty. Nicely played. Dap touch. Fielder diving, can't stop that one. And the fielder from deep cover had to come in. Another couple of runs. Excellent running. So far 9 runs of this over. Of Datta Prasad Gaonkar. Datta Prasad Gaus. Dattaraj Arondekar just a bit tiring as he has ran too many times in this particular over. Doubled it up. Nicely played. Up and over the infield. Again wants to come back for the second. This is excellent running. Terrific running between the wickets. Pushing his partner, pushing himself. 133 they move on to now. Good delivery. In fact, no, that's wide. More extras. This is agonizing now for the bowler. Just trying to lengthen some weight. Nicely played. Looking for the second.
No. His partner not interested. He's not happy. Needs some water. Just to cool things down. Maybe having some problems with his hamstring. 135 for 7 after completion of 17 overs. Rises. Chetan Sangelkar starts off with a dot delivery right in the block hole. Last 3 overs remaining. 135 for the loss of 7. Grizes. Dattaraj Arundekar in the middle. Nicely played. And the fielder will watch it sail over his head. It's timing extremely beautifully. And gone for 4. Score moves on to 139 for 7. Well, Chetan Sangelkar has been touch expensive today. Has gone for 23 so far. What can he do to make his figures better? Nicely played, watchfully played, gets a single. Turns the strike over to Pritesh Shetty. Hasn't faced a delivery yet. Nicely played. Straight to the fielder. Venkat, bit of fumble, but good recovery, just one. Advocates Cricket League Season 7. 6 teams today on display. Earlier in the morning, Legal Titans took on the Loyal Challengers. Loyal Challengers winning that game by 48 runs. This time down the ground. Some work on the fielder. And will make it quite comfortably yet again. Running between the wickets has been terrific by Dattaraj Arundekar.
and his partner Pritesh Shetty. Score moves on to 141. Nicely played. Again, a slow delay has been towards the point field for one. We're in the driver's seat. The Lotlik Alliance with the 4 early wickets. And then the big partnership which came with Abhinav Marathe and Dattaraj also in the end now providing that support. 144 for 7 after completion of 18 overs. Risers. Looking for a quick single. Has got it. Eventually has given the strike back to Pritesh Shetty. Nicely played. But straight to Gashanan Korgaonkar. Another single taken. Gone. Given. Dattaraj doesn't look amused with that decision. But we'll have to head back to the pavilion. He's gone for well compiled 44 of 30 deliveries. Gone. Straight onto the pads. 146 for 8. Rises. Good delivery, looking for a single and will get it comfortably. Bye is given. Score moves on to 147. Down the leg side, asking to be hit and easily put away by Pritesh Shetty. 151. They march on to now. The Risers. Who would have thought after losing 4 early wickets, they would be in this kind of position. The late order batsmen have completely given that impetus in this innings. Up in the air, just gone over the keeper on the bounce to Robin. Will just be one.
152 for the loss of 8 wickets after 19 overs. 1 over remaining in this batting of Rises. 152 for 8. In fact, that's a wide. Extras. Final 6 deliveries remaining in this innings. 153 for the loss of 8 wickets. Coming forward down to the fielder at deep square leg. Does well. And will get one. Coming back for the second. Oh, that's gone over. This is poor bit of cricket. Where there was just one, they have given two. Well. Again, looking for the fourth, but not on. This kind of errors definitely get you towards the end, towards your second innings when you will be coming to bat. Full toss delivery. Nicely played. It's running towards the fence and will be cut off. Excellent work. Will just be a couple. Score moves on to 158. Still 4 deliveries remaining. What are they trying to get? 165, 70 maybe. Nicely played. Again pushing for the second. And make it quite comfortably yet again. 2 more added. Excellent running by these two. Well, this 9th wicket has added so much to the total. Running between the wickets is excellent. 160 for the loss of 8 wickets. Final 3 deliveries. Is there a boundary or a maximum coming? This time, no proper timing. Will get one. Last 2 deliveries. 161 for 8. Dot ball. 1 more delivery. Final delivery of the innings. The position they were in, 26 for 4. Excellent partnership by Rohit, Abhinav, and then some really good batting display by Dattaraj Arondekar. And now these two looking for the second run. Chance of run out, and that will be gone. Pritesh Shetty couldn't quite make it to his batting crease and will be just the one single on the final delivery. So 160 162 has been posted for the loss of 9 wickets. Target of 163 runs will be required to win for the Lotlik Alliance when they come out to bat in the second innings.
शेख दावस्कर की गेंदबाजी एपर्डेंट की ओर से। और काफी बाहर डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास असफल। अनूप का वाइड का इशारा। बढ़िया ड्राइव मगर अपनी गेंदबाजी पर खूबसूरत फील्डिंग। प्रशांत बोरकर नॉन स्ट्राइकर, दत्ता प्रसाद गावस ऑन स्ट्राइक। संभलकर इस बार और एक रन। धीरे से बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए दोनों ही बल्लेबाज लॉटलिक लायंस 163 रन बनाने हैं। क्रिकेट लीग का ये शानदार मुकाबला सीजन 7वां, आज दिन चौथा और मैच नंबर 8। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जल्द 4 विकेट खोने के बाद फिर भी एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है राइजर्स ने। एक रन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग 8 रन प्रति ओवर बनाने हैं बल्लेबाजों को। तो क्या उस रफ्तार को जारी रखेंगे? फिर से एक बार बिल्कुल उछाल भरी गेंद, सीधी लाइन से टेक, बिल्कुल उनके रिप्स पर गेंद आ लगी है, थोड़े से दर्द में, अगर अपने आप को संभालते हुए बल्लेबाज। प्रशांत बोरकर और फिर से उछाल भरी गेंद, और की समाप्ति पहली, 5 रन।
और विजय कुमार रेड्डी की ओर से जिसे स्टाफ द्वारा बिल्कुल बढ़िया कार्य, अच्छी मेहनत कर रहे हैं मैदान पर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के स्टाफ, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा एसीएल की ओर से धन्यवाद। और उन सभी को धन्यवाद जो इस इसी बीच सही पकड़ नहीं बनाई, मगर फिर से एक बार अपने शायद अंगूठे पर लिए है गेंद, बिल्कुल तकलीफ में थोड़ी सी नजर आते हुए दत्त प्रसाद गावस। फिर भी तेवर देखिए, मर्द को दर्द नहीं होता वाला। आई एम फाइन यहां पर फर्स्ट एड बॉक्स है और पेन रिलीफ स्प्रे भी अगर चाहिए तो उसकी मदद ले सकते हैं। सुंदर लाइन, तेज गति, यही खासियत दत्तराज अरुंदेकर की। न सिर्फ अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, अब अच्छी गेंदबाजी, और गेंदबाजी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। ये आज के दिन बिल्कुल काइल टिकलर की जबरदस्त बल्लेबाजी रही, क्या जमकर बल्लेबाजी की उन्होंने। फिर से एक बार शायद बिल्कुल फ्लाइंग मशीन की तरह अनूप कुर्तड़कर, इंसान उड़ता हुआ देखा मैंने बिना पंख के, वो है अनूप। क्या कमाल की विकेट कीपिंग, ही इज अ फ्लाइंग मशीन। इस बार गेंद बिल्कुल उनके पैरों के बीचों बीच से निकलती हुई, लगातार एक्स्ट्राज यहां पर मिलते हुए और दत्तराज अरुंदेकर थोड़े से महंगे साबित होते हुए अपने हाथों को सर पे लगाकर अफसोस करते हुए कि ये तो मेरी गेंदबाजी नहीं, मुझे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। और एक क्विक लर्नर है दत्तराज अरुंदेकर। फिलहाल विकेट की कोई सफलता नहीं, फिर ये दूसरा और प्रगति पर 163 का पीछा करती हुई टीम लोटलिक लायंस। हल्का सा महंगा ओवर, बिल्कुल काफी सारे एक्स्ट्रा जी ओवर में आते हुए 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 5 रन दिए हैं दत्तराज अरुंदेकर ने भी, तो वह 10 रन स्कोर के खाते में 2 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 163 रनों का पीछा करती हुई टीम लोटलिक लायंस। फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे जो कि शुरुआत करेंगे तीसरे ओवर की, स्कोर 10 बिना किसी नुकसान के, और सामने बिल्कुल दत्त प्रसाद गावस।
पैड से टकराई, बाहर को जाती हुई गेंद, और बिल्कुल एक लेग बाई का इशारा। एक रन के साथ स्कोर 11 पर। अभी भी काफी लंबा समय और काफी लंबा सफर तय करना है लायंस को। गुड लाइन डिलीवरी, बिल्कुल पूरे बल्ले के साथ खेला 1 रन के लिए। अभिनव की सुंदर फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, मगर कोई खतरा नहीं बल्लेबाजों को। 1 रन आसानी के साथ बटोरते हुए स्कोर को पहुंचाते हुए धीरे से 12 रनों पर, धीरे से 12 रनों पर। अब इस मैच में किस टीम के बजेंगे 12, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल स्कोर हुआ है 12 लोटलीकर लायंस का। और बल्ले का द्रोही से लगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात, सुंदर प्रयास, अच्छी कोशिश। कल्पेश कामत, उनकी कैप का रंग इतना खूबसूरत है कि एलियन भी आज से देखने चले आ जाते हैं धरती पर। He definitely has a lovely cap with beautiful colors. बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड, मगर हल्का सा डिफ्लेक्शन। उतनी बेहतरीन फील्डिंग, हर एक रन को बचाने की कोशिश स्वाभाविक रूप से दिखती हुई मैदान पर। ये कमिटमेंट, ये कोशिश राइजर्स के फील्डर की ओर से। दोनों ही टीमों को जीतना है, कल दोनों ही टीमें हारी थी। और इसे भी सही पकड़ नहीं बनाई, मगर वहां पर शायद गेंद को रोकने में कामयाबी मिलेगी फील्डर को, और 2 रन का मौका मिलेगा इसी बीच। देखिए टाइमिंग का होना कितना जरूरी है। अगर अच्छी टाइमिंग है तो निश्चित तौर पर निस्संदेह है वो चौका था, मगर थोड़ी सी टाइमिंग पर संघर्ष करते नजर आए दत्त प्रसाद गावस। और अपने बल्ले को अच्छी तरह से देखते हुए और इस बार केवल फ्लिक कर दिया है ऑफ साइड में। और सुंदर रनिंग का प्रयास, जबरदस्त रनिंग। जहां उम्मीद थी कि केवल 1 रन मिलेगा, मगर 1 रन को 2 रनों में तब्दील किया। इसी प्रकार की रनिंग के लिए जानी जाती है लायंस। ओवर की समाप्ति 3, 18 रन बिना किसी नुकसान के, 18 for no loss after 3। में एसीएल की फैंटास्टिक टीम काफी सुंदर कार्य करते हुए पर्दे के पीछे, काफी मेहनत उनकी। बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग स्टुपेंडस जॉब। 3 अंपायर विजय कुमार रेड्डी, अबरार खान मैदान पर, इम्तियाज शेख थर्ड अंपायर। फोटोसोनिक प्रोडक्शन की टीम इस मैच का लाइव प्रसारण सभी दर्शकों तक पहुंचाते हुए उनके प्रोप्राइटर द रिचेस्ट यूट्यूबर शुभम नाइक हमारे बीच मौजूद। मैं नदीम अहमद, मेरे साथ अंग्रेजी में शाम कलंगुटकर, जो शाहपुरा से हर रोज इस मैदान पर पहुंचते हैं। स्कोरिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल बाप बेटी गिरी, शैलेश नाइक, मैनुअल स्कोरर, डिजिटल स्कोरर यश नाइक, और डीजे मोटू पतलू की जोड़ी योगेश और साहिल। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, गेंद को शायद रोका जाएगा। फील्डिंग बिल्कुल बेमिसाल, कोई दो राय नहीं कि अच्छे फील्डर्स हैं, बिल्कुल जबरदस्त फील्डर्स हैं। हर एक गेंद को केवल 1 ही रन देंगे, 2 मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा।
इस प्रकार की सुंदर फील्डिंग के लिए जानी जाती है टीम द बॉयज इन येलो राइजर्स। फुल टॉस गेंद, गेंद हवा में, कैच का मौका मुश्किल, मगर 2 रन आसानी से ले सकते हैं बल्लेबाज। तो हर एक गेंद पर 2-2 रन लेकर बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत दी है। अब तक कोई खतरा नहीं बल्लेबाजी को, और एक बल्लेबाज भी अब तक नहीं आउट करने में कामयाबी मिली है गेंदबाजों को। संदीप नाइक गेंदबाजी में चौथा ओवर लेकर। इस बार बिल्कुल मिल सकता है चौका, बिल्कुल बढ़िया शॉट। से बिल्कुल अच्छा स्वीप शॉट। अब फील्डर वहां पर डीप में गया जो कि है वैभव, सबसे युवा, केवल 24 वर्ष आयु के वैभव। कट करने की कोशिश, मगर सही लाइन संदीप की। अभी भी 2 गेंदें आने बाकी है। हालांकि चौका लग चुका है इस ओवर में, मगर नियंत्रण लाने में कामयाबी मिलती हुई संदीप नाइक को। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 4। पच्चीस रन बिना किसी नुकसान के 4 ओवरों के समाप्ति के बाद। गेंदबाज हर्ष, जो बल्लेबाजों पर अक्सर हार्श होता है और अपनी टीम के साथ हम्बल। हाफ वाली पर बढ़िया ड्राइव, वहां पर अभिनव मराठे बिल्कुल काफी तेज तर्रार दौड़, 1 रन मिल सकता है। और देखिए 1 ही रन मिलेगा। तो इसी प्रकार की जबरदस्त फील्डिंग के लिए मैं इनकी तारीफ करता हूं। राइजर्स क्या कमिटमेंट, और कितनी दूर से दौड़ कर आए हैं अभिनव मराठे बैकअप फील्डर के रूप में। वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग यूनिट राइजर्स। गेंद हवा में, कैच का मौका आसान सा, और आउट। विकेट की सफलता गई हर्ष पारिक ने। पहला विकेट का झटका लगता हुआ लोटलिक लायंस को, और दत्ता प्रसाद गावस बड़े शॉट लगाने की फिराक में कैच दे बैठे हैं। हर्ष पारिक
वेंकटेश राठौड़ एक अच्छे बल्लेबाज जो कि लॉटलिक लायंस के काफी अच्छे शॉट्स उनके पास, जब टाइमिंग करते हैं तो सुंदर टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं वेंकटेश। आगे को सुंदर फील्डिंग, दौड़ने का न्योता देते हैं प्रीतेश शेट्टी। जब कभी मैदान पर होते हैं तो अपनी छाप छोड़ देते हैं, कुछ अद्भुत कर गुजरते हैं, जो मेरे चेहरे पर काफी दिनों तक मुस्कुराहट रख देती है उनकी अदाएं। और जो अदा उन्होंने की प्रवीण गावस को आउट करके अभी भी मुझे याद है। बैकफील्ड पर संभल कर पूरे बल्ले के साथ खेला, फिर से एक बार अपनी सुंदर गेंदबाजी का क्रम जारी। हर्ष पारिक एक विकेट की सफलता भी, क्या बात है। 5वीं ओवर लगभग समाप्ति की कगार पर, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया। नए बल्लेबाज है मगर फिर भी देखिए दम कम, और गेंद बिल्कुल मैदान के बाहर जाती हुई 6 रन। आखिरकार आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति की। 5 ओवर समाप्त, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33, एक विकेट के नुकसान पर। चेंज द वॉइस। .33 for the loss of 1 wicket after completion of 5 overs. The Lotlik Lions cruising along nicely right now. Venkatesh Rathod and Prashant Borkar. Pritesh Shetty down the leg side that time. And that will be wide. Up in the air. Will fall in no man's land. Abhinav Marathe coming on that one. And 2 more runs added. Need a big partnership. It's a stiff target. 163. Short delivery. Again, Abhinav Marathe does excellently. Terrific bit of fielding effort. Commitment shown. Well left. Good delivery. .36 for the loss of 1 wicket. Venkatesh Rathod and Prashant Borkar in the middle. Nicely played. On top of the bounce. Will just be one. Anup Kudtarkar, the wicket keeper. Who's the team?
Flown away. And that will go into the fence. Field after it. Can he track that down? No, he can't. Yet another boundary. Runs are coming thick and fast for the Lotlik Alliance. This time in the air, and what a catch that is! Easy as you like. Tall man taking that catch. Plucked out of thin air. 41 for 2. Second wicket down, and Prashant Borkar departs. Oh. 41 for the loss of 2 wickets. What an effort that was from Shubham. Excellent take. Terrific catching. 41 for 2 after completion of 6 overs. 122 for the loss. 122 required now. Target of 163. Venkatesh Rathod back on strike to face Sandeep Naik. Bowled the previous over, gave 7 runs. Now from the Chikalim circle end. Nicely played, but straight to the man at back to the point. Dot delivery. Nicely played. Some fumble from that fielder. Taraj Arondekar, and will allow Venkatesh Rathod to get a single. Brings Sandeep Dimelo on strike. Sandeep Dimelo needs to play a gutsy innings since his arrival now. Can't afford to be bogged down with easy looking deliveries. Nicely played. Gets up the mark with the single. Just nudges it around. Score moves on to 43.
Overthrows. Another single. Shimmy down the wicket and gone over that man quickly into the fence for 4 overcovers. Terrific boundary off the back foot onto the front and overcovers. After 7, it's 58 for 2. Change in bowling, it will be Dattaraj Arundekar, or is it going to be, no, Harsh Parekh. 50 for the loss of 2 wickets after 7. Harsh has been brought in. Nicely played. Just for a single. Got a wicket earlier on. Now into his second. Full toss delivery. Again bunted down the ground. Again straight to the fielder at wide-ish long off. Just for 1. In the air. And oh, put down. Easy chance, and that has been shelled by Harsh Parekh in his own follow through. Venkatesh Rathod trying to up the ante. Went up in the air. And Harsh Parekh completely spilling the beans. Nicely played again. Will just be a single. Abhinav Marathe won't be happy with that drop chance. Full toss, low full toss down the ground again. And will pick up 1. Ended the over after completion of 8. It's 56 for 2. 56 for the loss of 2 wickets after 8 overs. Lotlik. Appealing and gone, given. That's out. Right in front. And the 3rd wicket down as Lotlik Alliance lose another. You can see it on the replay. Photosonic Productions. Sandeep Naik came in and gone. Outside edge into the hands of the wicketkeeper.
56 for 3. $56 for 3. In a spot of bother, the Lotlik Alliance. 107 required in 71 deliveries. Nicely played. And will get one. Straight away gets off the mark. Venkatesh was looking good. Trying to cut one and ended into the hands of the wicketkeeper. The skipper behind the stumps. Nicely played up and over the infield. In fact, over the bowler's head. Will get one. Need to take this game as deep as possible. It's not gone out of their hands right now. Flighted delivery. Another dot delivery. Building pressure is Sandeep Naik. Oh, excellently bowled. Terrific bowling this. Tying the batsman. Not to come forward and now the back. Caught on the crease. Just like how in the morning Iftikhar Agha did. That's cut away. And cut away for 4. In the gap. No chance. And gets yet another boundary. Will continue. Nicely played. Looking for the second sandback. Just the single. Sandeep Gemello and Pankaj Naik. Now requiring exactly 100. 165 deliveries. 10 to 11 runs. 11 runs per over. From here on. Nicely played again and again. Harsh Parekh, oh, that's gone through and will be one more. That's sloppy. And now nobody there. Looking for the third. No, not quite. Completely lost it in the end. Harsh Parekh. Maybe the glasses could be the issue. Dropped a chance earlier and now must be seeing somebody else at the wicket. Christmas is approaching. Christmas Eve today. Again, good delivery. This time will get one. Down to Abhinav Marathe, who comes on from the
deep mid wicket fence. Another single taken. Nicely played. Up and over. Couple of bounces into the hands. Yet again, another single taken. Need to take it as deep as possible. Now requiring 96 in 62 deliveries. Flat batted. Down to the field at deep extra cover. Just one. ACL 2025-26. Season 7. Lotlik Alliance taking on the Risers. Risers have set 163. In reply, 68 for 3 right now. Shimmer down the wicket, straight to the fielder. And will be a dot delivery. Dot delivery to end the over at the halfway stage. 68 for 3. The Lotlik Alliance needing. कांटे की टक्कर इन दोनों ही टीमों के बीच, मगर आखिरी ओवर में काफी मजा आया. एक कैच छूटा उस पर, फील्डिंग पर कॉमेडी ऑफ एरर्स बिल्कुल दिखाई दिया. तो 68 रन बने हैं. तीन विकेट अब तक खो चुकी टीम लॉटलिक अलायंस. गेंदबाजी में संदीप नाइक. शुरुआत 11वें ओवर की. कट करने की कोशिश, मगर अच्छी गेंद, हल्की सी उछाल भरी, मगर सही लाइन पर गेंदबाजी है संदीप के. हल्के से बल्ले का मिला, मगर कोई रन का मौका नहीं बल्लेबाज के लिए. पंकज नाइक उनके साथ संदीप डिमेलो. देखना होगा कि ये जोड़ी कितनी दूर तक ले जाती है. स्कोर को 163 का लक्ष्य रखा है राइजर्स ने. लोअर फील्डर्स पे बड़ा शॉट, गेंद हवा में, मुश्किल है कैच, मगर गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार. 4 रनों के लिए बिल्कुल कमाल का शॉट है पंकज का, सही बल्ले से और सही. तो फिर से एक बार
कोर्स की दिशा की ओर खेलने की कोशिश, जहां पर अभिनव तैनात। जबरदस्त फील्डिंग के लय में सुंदर गेंदबाजी संदीप नाइक की। लगातार दो डॉट गेंदे चौके के बाद अच्छी कमबैक। और फिर से एक बार देखिए हल्की सी उछाल भरी गेंद, क्या लगातार डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये मैदान पर अक्सर शाम के वक्त काफी मेहनत करते हैं, जॉगिंग, नॉकिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस। वो है अभिनव मराठे। 72 रन 11 ओवरों की समाप्ति के बाद दत्तराज अरुंदेकर गेंदबाजी में, जो कि दाबोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। 12वीं ओवर की शुरुआत और काफी बड़ी जिम्मेदारी लंबे जगत के बल्लेबाज संदीप डिमेलो उनके कंधों पर, उनके साथ पंकज। 3 विकेट के नुकसान झेलकर बल्लेबाजी कर रही है 163 रनों का पीछा करती हुई टीम लोटलिक लायंस। फिर से एक बार बिल्कुल आई होल्ड माय फिंगर्स क्रॉस, इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। तो देखना होगा कि यहाँ क्या बल्लेबाजी संयमशीलता के साथ होती है या फिर जल्दबाजी में अपने विकेट खोकर दबाव में आकर इस मैच से हाथ धो बैठते हैं लायंस, या फिर अच्छी साझेदारी के साथ लंबी पारी खेल इस मैच पर कब्जा बनाते हैं। फिलहाल गेंदबाजी में दत्तराज कट करने की कोशिश, काफी तेज तर्रार गेंद 120 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर शोएब अख्तर सबसे तेज 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेज तर्रार गेंदबाज रहे हैं। और दूसरे नंबर पर अगर इंटरनेशनल स्पीड गेंदबाजों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियन ब्रेटली और शॉन टेट 161.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे नंबर पर। दोनों ऑस्ट्रेलिया से बीच कराएंगे और वहां पर कैच का मौका वैभव के लिए, और वैभव ने कैच पकड़ना तो दूर की बात, गेंद को पुश किया, जाओ 6 रन के लिए चले जाओ। एक आसान सा मौका गंवाते और वैभव से बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। सबसे बेहतरीन, सबसे तेज, सबसे यंग, सबसे डायनामिक फील्डर राइजर्स के वैभव संभलकर इस बार सही लाइन दत्तराज अरुंदेकर के। काफी एग्रेसिव गेंदबाज, फास्ट एंड फ्यूरियस राइजर्स के। उनकी जैसी तेज गेंदबाजी शायद ही कोई गेंदबाज कर ले राइजर्स में। नाम है दत्तराज अरुंदेकर। इसी बीच फिलहाल बाबा का बुलडोजर मैदान पर नजर आता हुआ। वॉर फुटिंग पर बिल्कुल कार्य चल रहा है इस मैदान की कंपाउंड वॉल का। फिलहाल कलाई के साथ उपयोग कर गेंद को ढकेलने की कोशिश, तो शायद वाइड का इशारा है। बिल्कुल कोई संपर्क नहीं, न गेंद, न बल्ले का, न गेंद, न पैड का।
काफी बाहर थी गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर बिल्कुल अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए विजय कुमार रेड्डी थोड़ी तंदुरुस्त नजर आते हुए। फिट एंड फाइन, इसी बीच एक रन आसानी के साथ मिल सकता है। कमलेश कामत काफी तेजी से गेंद पर लपके। कमलेश कामत की सबसे अच्छी बात उनकी कैप। कल्पेश कामत की सबसे बेहतरीन सुंदर की कैप उनकी। पूछना होगा कि कहां से खरीदी है, मुझे भी एक लेना होगा। ओ बढ़िया शॉट, सही टाइमिंग, सही ताकत, सही नजाकत। अभिनव मराठे देखते रहेंगे, उनके सर के ऊपर से दन दनाता छक्का, 6 रन। खोल दिया है युद्ध का लोटलिक लाइंस। माफी चाहूंगा, पंकज के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता शॉट, मगर उससे पहले बिल्कुल कलाइयों के साथ खूबसूरत डीमेले के बल्ले से, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज अपना मोर्चा खोल चुके हैं, आगाज कर चुके हैं जंग का। जंग की शुरुआत हो चुकी है। वैभव बढ़िया ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, वहां पर अभिनव मराठे तैनात, बिल्कुल दीवार की तरह, मजबूती की दीवार टूटेगी नहीं। जेके सुपर सीमेंट से जो बनी है, या फिर कहें भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा मजबूत टिकाऊ। बढ़िया शॉट फिर से एक बार, मगर केवल एक ही रन मिल सकता है, क्योंकि फील्डिंग की अगर बात की जाए तो उसमें कोई दुराई नहीं, जहां एक मिलना है वहां एक ही रन मिलेगा। मगर जब कभी ये हवाई आक्रमण करते हैं तो बिल्कुल दर्शनीय शॉट देखने को मिलता है, पंकज या फिर हो संदीप डिमेलो की बल्ले से। और देखिए थोड़े से डीप कवर्स में तैनात। इस बार फिर से एक बार थर्ड करने रुक गई है, गेंद बिल्कुल रफ्तार पकड़ती हुई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच, मगर सुंदर फील्डिंग, जब तक गेंद को वापस करते 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए संदीप डिमेलो और पंकज नायक की भी बिल्कुल काफी सुंदर रनिंग। लायंस फिर से एक बार अपनी लय में आते हुए, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, क्या नजारा क्रिकेट का इस खूबसूरत मैदान पर। आ चुका है एडवोकेट क्रिकेट लीग का बेहतरीन टूर्नामेंट। बैकफुट पर बढ़िया शॉट, मुश्किल रहेगा गेंद को रोकना, गेंद रफ्तार पकड़ती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए डीप मिड विकेट की दिशा में। तांबडी तांबडी 100 से संभलकर कलामी के साथ खेल दिया, 1 रन, 1 रन के साथ 2 रन की कोशिश रहेगी, क्योंकि पहला रन काफी तेज, मगर रुकने को कहा, इशारा वेटिंग का पंकज की ओर। स्कोर पहुंच चुका है 99, नर्वस 99। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था। सौ रन पूरे लोटलिकर लायंस के, 100 अप फॉर लोटलिकर लायंस।
100 के आंकड़े पर पहुंचते और इसी के साथ ओवर की समाप्ति भी 13 ओवर समाप्त, स्कोर 100, 3 विकेट के नुकसान पर। चांगली चांगली की शुरुआत करेंगे 14वें ओवर की, स्कोर 100, 63 रनों की आवश्यकता, यानी कि बचे हैं 42 गेंदें, 63 रन, 42 बॉल्स, 63 रन। आएगा मजा जब भिड़ेंगे ये दो टीमें, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, एडी चोटी का जोर लगाएंगे जीत के लिए, वाइड का इशारा। लियोनार्डो डी कैप्रियो की तरह बिल्कुल अपने बाहें को फैलाकर वाइड का इशारा विजय कुमार रेड्डी की ओर से। सुंदर गेंदबाजी, अभिषेक दावस्कर फिर से एक बार वाइड, हालांकि लेंथ बढ़िया, लाइन पर ध्यान देना होगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102, यानी कि अब 61 रनों की आवश्यकता 42 गेंदों में, 42 बॉल्स, 61 रन नीडेड। बढ़िया शॉट, मगर वहां पर खिलाड़ी तैनात शुभम गड़ेकर, हल्की सी फंबल, मगर वहां पर टीम वर्क, वैभव बैकअप फील्डर, कोई मौका नहीं दूसरे रन का। तुरंत अपोलोजाइज करते हुए, अपनी गलती पर खेद जताते हुए शुभम गड़ेकर, जिन्होंने एक हाथ से कैच ले ली, चिपकाई लो फेविकोल वाली। जब कैचेस की बात आती है तो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वो है शुभम गड़ेकर, जो कॉम बॉक्स की ओर दौड़ता चला आ रहा है। संभलकर पूरे बल्ले के साथ केवल दिशा दी पॉइंट की ओर, 1 रन। तारीफ करनी होगी संदीप डिमेलो की, काम कूल कंपोज, बिल्कुल अपना सर नीचे रखकर बल्लेबाजी करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, जानते हैं कि किसी न किसी को टिकना होगा, खेलना होगा और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फिलहाल क्रीज पर डिमेलो। पंकज का बढ़िया शॉट, गैप है, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ खड़े खड़े खेल दिया है डीप क्रॉस की दिशा में, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। बढ़िया शॉट, क्या सूदिंग साउंड है, और इसके बावजूद अच्छे प्रयास के गेंद सीमा रेखा पार जाती हुई 4 रन के लिए। इक्का दुक्का रन कम और चौके ज्यादा फिलहाल बटोरते हुए बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रनों पर, बिल्कुल 50 रन की आवश्यकता, 50 रन मोर नीडेड फॉर लॉटलिक लाइंस। आगे का इस बार पूरी तरह से चूके, हल्की सी फंबल वहां पर कलेक्शन में, मगर कोई रन का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति 14,
14 ओवर समाप्त, 113, 3 विकेट के नुकसान पर। वैभव नामशिकर फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे, जो की शुरुआत करेंगे 15वें ओवर की। स्कोर 113, 3 विकेट के नुकसान पर, 50 रन दूर। 36 गेंदों में फिलहाल, अब 35 गेंदों में। बढ़िया ड्राइव क्रॉस की ओर, और शुभम की वहां पर लूज फील्डिंग, खामियाजा भुगतेगी टीम राइजर्स। बिल्कुल हाथों के बीचों बीच से निकल गई ये गेंद, और लक्की बाउंड्री में तो कहूंगा लायंस के लिए, बटोरेंगे बिल्कुल दोनों हाथों से। हाफ वाली पर फिर से बढ़िया शॉट, मगर इस बार सुंदर फील्डिंग दत्तराज अरुंधेकर की। लगातार फुलर और लगातार हाफ वॉली पर गेंदबाजी करते हुए, जो कि खतरनाक साबित होता हुआ वैभव को। डॉट गेंद, फिर से एक बार शायद एक ही रन मिल पाएगा, या फिर हल्की सी चूक, मगर तुरंत गेंद पर अपना नियंत्रण बनाया दत्तराज अरुंधेकर ने। अब अच्छा कंट्रोल, अच्छी कमबैक करते हुए वैभव नामशेखर। पटकी विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, फिर से एक बार जबरदस्त शॉट, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीचों बीच से गेंद निकल गई, 4 रनों के लिए। ये मैच अगले 5 ओवर आपको सुनाएंगे इस मैच का अखुद का हाल शाम कलंगुटकर। चेंज वॉइस। Thank you, Mr. Ahmed. 123 for 3. 40 required in 5 overs. Well, this game's still not done yet for the Risers. If they decide
plan accordingly, they can get back in this game. But currently, these two have got a partnership for the Lotlik Alliance. Sandeep Di Mello and Pankaj Naik. Delightful strokes. Previous over as well from Sandeep Di Mello. Terrific batting. 123 for 3. Pritesh Shetty from the Chikalim circle end. Oh, good delivery. Dot delivery. Nicely played. On the bounce to the fielder. At the wideish long offense, just one. 124. 39 more required. Sandeep Di Mello back on strike. Left alone. And that will be a dot delivery. Nicely played, nicely worked off his legs down the ground. And will get a single. Terrific return from the boundary rope. Turn to the bat and will get one. Okay, no pressure whatsoever right now on the batting team as they are getting the singles whenever they want to with minimal bit of efforts. Nicely played. Straight to the fielder, the Taraj Arundekar quickly onto that one. And good return as well. 4 runs coming from that over after completion of 16 overs. It's 1-7 for 3. $127 for 3 and Harsh Parekh. Advancing down the wicket, up and over, fielder. Oh, popped out of his hands. Gone. Would have been a goner, Sandeep Di Mello, but wasn't to be. 2 more runs added.
Again, this time much more safer and gone through. And that's a boundary. Well, Lotlik Alliance cruising now with that boundary. A drop chance earlier on. Now in 22 deliveries. 22 deliveries, 30 runs to win. 133 for 3. A target of 163 was required. Solidifying his place in the middle, Sandeep De Mello just dropped earlier. And how costly that chance could be. This time nicely played. Is it in the gap? Has he found the gap? Yes, he has. Yet another boundary. Inching closer towards the target, the Lotlik Alliance. Lately showing that he is the boss in the middle. 137 for 3. 26 more required. 21 deliveries left. Harsh Parekh has not been his day today, especially with the glasses. Dropped a chance earlier, then threw one, and now getting very expensive. Couple of the first, then 2 consecutive boundaries. Anup Kurtarkar, can he throw in a last piece of his dice to turn this game around? 137 for 3, 26 more in 21. Has Harsh Parekh given some advice? Good delivery, dot delivery. That's where you gotta be, right outside the off stump. Doesn't matter, it's a shorter part, but batsman trying the onside. Oh, could be possible chance. That's a wide. Maybe just pushed to unsettle the batsman. Another extra. 24 now in 20. Up in the air. Field getting underneath. And taken. Dattaraj Arundekar taking the catch. And Harsh Parekh finally getting a wicket. And does it open the door for the risers? We'll have to wait and see. Before required in 19 as Kunal Naik Gaokar comes out to bat. After that dismissal of Pankaj.
Finally, that partnership has been broken. Still one delivery remaining in this over. Can Harsh Parekh again get one more? And again, try and put some pressure back on Sandeep De Mello, who is at the other end, batting so well, but he needs to carry on and get those required runs. Well, his counterpart, Anup Kulkarkar, thinking and plotting some new thing to stop this. Oh, excellent delivery. Has it gone down? Well, the reaction says it all. That looks like it is Nick, and that has been put down. 24 required of the last 3 for the Lotlik Alliance. Pritesh Shetty, 24 in 3 overs. Kunal Naik just dropped earlier. And now Sandeep De Mello back on strike. Responsibility completely lies on his shoulders and the remaining batsmen to come. Kunal is there, but still, you just never know. 1 wicket has been achieved previously. Nicely played. Straight to the man, and will get 1. Looking for the second, but denied by his partner. Just 1. 140 for the loss of 4 wickets. 23 required in 17 deliveries. This definitely has gone down the wire. Flat batted straight to the field. A chance of run out. Diving effort, and seems to be fine, says the officiating umpire. Not collecting it cleanly, Harsh. Diving effort. Nicely played. Oh, very close. Another single taken. Just that the risers now need to try and control this game, not to give any boundaries. So to put more pressure on the man in purple and dark blue. This should be avoided as well. Extras are no ball. This will be a free hit now. Opportunity, a license for Kunal Naik. Nicely played. On the bounce. Coming back for the second? No, just settling for 1, and rightly so. Just 1. 20 required in 14, 19 in 14. Shimmer down the wicket, nicely played. Down to the Taraj. He played brilliantly today. 44 runs, he got dismissed. Took a catch as well. Good all-round performance from him. 18 in 13 deliveries. 18 more required. Big shot coming in the air and taken.
Another wicket falls as Kunal Gaokar departs. Vaibhav taking that catch. Still requiring 18 in the last two. Eighteen in 2 overs. Gajanan Korgaonkar, skipper of the team, has just joined Sandeep De Mello. 18 required in exactly 12 deliveries. Have the Risers come back in this game with those 2 wickets? Or Sandeep De Mello, along with the skipper, has some other intentions for the next 12 deliveries. Dattaraj Arundekar has been brought in to get rid of either of these 2 so that they can put them into more halt in this run chase. The Lotlik Alliance. Today morning we saw 200 runs being scored in the ACL Season 7. Courtesy of some brilliant batting by Chichigwan and Risaj Taravlikar. Victorious. The Lloyd challenges by 48 runs against the Legal Titans. And now in pursuit of 163. 18 away in 2 overs. Sandeep De Mello on strike. 18 required to win in 2 overs. Gajanan Korgaonkar to the other end has just joined Sandeep De Mello. Yes, Dattaraj Arundekar bowled 2 overs, 23 without loss. Hasn't got any wicket. Bowling the responsible and very important penultimate over. Still some delay. Anup still needs some correction in the field. Looks like wants to send that fielder from point to the cover region and sweep a cover towards the deep point on the fence. Advancing down the wicket. Gets the single. And with that, half century for Sandeep De Mello. Excellent knock. Came in a trying time for his team and has shown his standards, lifted the standard of batting in this run chase. Top class innings. Was dropped earlier and cashing on that drop chance. Nicely played. Looking for the second. No, just settling for one. And this time, good backing up. Just that the backing has to be proper backing up. Superb bit of fielding efforts in the field by Shubham. Harsh should take something out of his book. Nicely played. Gets the single. Turns it around. 15 required in 9 deliveries. Looks like Sandeep De Mello needs some different willow. Not happy with something. Might have been a bit of crack in the bat.
15 required in 9. Dattaraj Arundekar again. To GK. False start, needs to reload that one. Up in the air. Field underneath. Can't get there. And coming back for the second chance of run out. Direct hit. And that's safely home. Two runs taken. Just gets in. 150 has been raised with that couple. 150 for 5. 13 required in 8 deliveries. Nicely played, nicely cut away. Oh, bit of fumble. Coming back for the second chance. Oh, at the other end. No, not quite. Send back. All sorts of things happening in the middle right now. $151 for 5. 12 required in 7 deliveries. What does Sandeep De Mello do now? Does he get a single? Does he try and get a boundary? Plays a lap in the air and taken. Finally, those glasses have shown some sight to Harsh. We'll see the funny side of it, but a fabulous knock from Sandeep De Mello. For 6. Last over coming up. 12 runs required to win. Ramkrishna Shetye, aka Robin, in the middle with his skipper Gajanan Korgaonkar. Absolutely needed that stroke, trying the ramp, and Harsh Parekh taking the catch at the short fine region. 151 for 6. 12 required in 6 deliveries. Who to bowl the last over? 12 required. Twelve runs required to win. Twelve required. Twelve required in 6 deliveries. Abhishek to bowl the final over. Swing and a miss. Dot delivery. The first one.
have just got a foot. Nicely played now. Chance. No. Just one. Now 11 in 4. 11 required 4 deliveries. Dot delivery the first. Next one, a single. Robin. Ramkrishna Shetty facing Abhishek. 11 required in 4 deliveries. Swing. In fact, that's wide. And a single as well. So 2 taken. 9 required in 4 deliveries. It's definitely heated up there. 9 required in 4 deliveries. Gajanan Korgaonkar, the skipper of the team. Connects one. Has he found the mid of the blade? Yes, he has. That's gone. What a hit that is in the context of the game. What a hit from the skipper. Well. What connection. You heard the sound. And he knew exactly when he connected that one that it will go the top. 3 required in 3. Well, a dot delivery on the first, then a single, then a wide and an extra run. And now this tremendous strike for half a dozen. 3 required in 3. Longer part of the ground, but still cleared quite comfortably by Gajanan Korgaonkar. Some more input has been put in the head of Abhishek by Dattaraj Arundekar. What does he try and do now? What reply does he come up with? Abhishek. Nicely played. And gets a single. 1 taken. 2 in 2. If it's a tie, then the points will be shared. There won't be any super over. The points will be shared. If it's a tie, 2 required in 2 deliveries. Nicely bowled, nicely played as well. Coming back for the second. And with that, the winning runs for the Lotlik Alliance. They are onto the table. And what a victory that is. Gajanan Korgaonkar in that last over with that powerful, humongous strike finishes the game off. Terrific batting. We'll quickly have a word with the skippers and also the man of the match.
came into bat, and those drop chances were very crucial. You have exactly hit the nail on its head. The drop catch in the long on region by Abhishek cost us the match dearly, because after that, if you go to see, there were 14, at least 10 to 12 runs scored in that over, and as you rightly said, Sandeep angered the inning right throughout, and if that wicket had, then I don't think the result would have been this. Tomorrow a break of Christmas, then you are again coming back. What would be the game plan to come back with a bang for the Risers? I think we need to correct ourselves in the fieldings, take all the chances. Unfortunately, I also dropped one chance behind the wicket. That was a crucial catch also. So every player in my team needs to buckle up and try hard for the good chances which we have dropped. Have a good one in the coming few days. Thank you. Merry Christmas. Meanwhile, we'll get to Sandeep DeMello for his insights. But still, we'll come back to Gajanan Korgaonkar, but a terrific innings under pressure. Well, you said earlier that one innings is due, and was that innings that was due today? Hopefully not. I hope there are a lot more innings. I think, I mean, we had a good start, luckily. We played off the new ball. And after that, luckily, the boundaries kept coming. Pankaj played absolutely amazing innings today, and he deserves a big hand. And of course, our bowling set it up for us. Weber bowled really well. Maybe we gave around 20-30 runs extra, and our fielding was a bit off. But at the end of the day, all's well that ends well. That last over, what was going through your mind sitting from here, as first delivery was a dot ball, then that tremendous strike, how the pressure came up and down in your belly, in your head? Well, I won't say there was no pressure, but I played with Gaja now for close to 15 years. And I know that every time something like this comes, he has a shot up his sleeve. And obviously, he pulled it off, and hats off to him. Win for the Lotlik Alliance, monkeys off the back. Now, hoping on to continue this momentum that you have gained just now into the coming tournament. In this tournament where it is the business end of the tournament, here you can say. Exactly, yeah. I mean, even last year, we started off slowly. We lost our first 3 matches. Then we managed to qualify for the knockouts. Hopefully, we've started a little earlier this time. This is the 3rd match, and we won 1. And if we can keep this momentum going, I see no reason why we don't win this tournament. Yes, have a good